their presence, we have our chairman of Chandigarh branch, the one who's packed with many talents, CEO Kar Singh sir, and who has taken up the charge to shower us with as much knowledge as we would require. Gracing us with his presence in a special session, we have CA Neeraj Mittal sir, who has been a speaker and trainer for over 10 years in the field of direct tax, indirect tax, and accounting of various organizations and companies. He is the visiting faculty on the subject of direct taxation and financial reporting in the classes organized by the NIRC and CIRC of ICI. He has inspired many members and students on the subject of public speaking and personality development in more than 10 countries of ICI. He has authored about 5 books covering the curriculum of CA course. His techniques of approaching any subject matter, style of revision, and guidelines for preparation of any examination are quite popular among the students. Thank you, sir. We are hungry. We have also amongst us various students to share their experiences in the various aspects of paper preparation. Light is what drives out darkness, and knowledge is what drives out ignorance. On this thought, please welcome Chairman Chandigarh branch, CA Kar Singh sir, our esteemed guest for lamplight. Thank you, everyone. Now, may I request our chairman of Chandigarh branch, CEO Kar Singh sir, to please address the audience. Please give a huge round of applause. My dear students, a very good evening to all of you. I, on behalf of Board of Studies of ICAI and Chandigarh branch of NIRC, ICAI and NICASA, welcome you all on virtual physical seminar on opportunity to learn skill set for paper presentation at CA student conferences. I am thankful to Chairman US Studies Operations of ICI
and Vice Chairman US Operations of ICI for arranging this wonderful session. I also welcome our speaker of the session, CA Neil Mitterji, who will be addressing you. I also welcome our young and dynamic brigade panelist students, Mr. Akshit Maheshwari, Ms. Muskan Minda, Mr. Gaurav Kumar Thakur, Ms. Priyanshi Jain, and Mr. Divesh Harbalan, who shall be speaking on some specific part of the art of paper presentation. As all you know that students are the future of our this great profession. We need hard work and dedication to qualify the exams of CA profession. I congratulate all the students who qualify this time CA exams and happy to tell you that our one student, Mr. Nikhil Garg from Panchkula, has got 33rd rank already. Congratulations to Nikhil Garg and his parents for this great achievement. And जो लोग नहीं पास हुए उनको भी थोड़ा हार्ड वर्क और करें और इस बार और अच्छे से तैयारी करके और अगली बार पास. The ICAI under the aegis of Board of Studies have created programs whereby apart from soft skill, technical skill, industrial training and extra activities, the all-round personality was 22. Today we will learn the art of paper presentation that would shape the career of all of you. On 22nd September, we are having program on Azadi Ka Amrit Mahotsav, and the theme is India's rich cultural heritage. I request you all to please join the program of Chandigarh. At the end, I thank you all for joining this program. और आप लोग इस प्रोग्राम के जरिए you will all learn that how to give presentation, how to learn about the presentation, how to make PPTs, how to make the paper work and other things in the CS conferences. Not CS1 conferences. अगर आप इस चीज को learn कर लोगे तो it means आप कहीं पे भी कोई भी प्रोग्राम पे बोल पाओ. और हमने ये प्रोग्राम रखा ही आपके लिए है कि अगर आप इसको लर्न करो और जो बच्चे आगे नहीं आ पा रहे हैं, जिनको थोड़ी की है, जो सोच रहे हैं कि हम पेपर नहीं बना सकते या हमें कहां से सीखें, तो ये प्रोग्राम उन बच्चों के लिए है. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. Now, I would request CA Carter to please present our CA final student with a bunch of flowers as a token of our love and peace. Also joining us virtually, Mr. Divesh Harbalan, with full emphasis on the aspect of audience interaction on the essential of paper presentation. Audience interaction and essential of paper presentation. Hailing from Hyderabad, Gujarat. This man has accomplished various titles through the years, has won numerous awards in public speaking, is multiple times in this winner, and is also a rank holder in CA Intermediate 2018 exams. He has also secured 13th rank in CA final exams 2021, the results of which were out yesterday, and this has added another feather in his cap. So, ladies and gentlemen, please give a huge round of applause for our freshly baked chartered accountant, Divesh Harbalan, who will be speaking on
on the topic. Aspect of audience interaction. Emphasis on the aspects of audience interaction and essential of presentation. India and what वो वहीं से करेंगे वो वहीं से करेंगे Vinesh will not be able to join us, so he will be joining us later. So we have one of our CA final student, Shilpi from Yamunanagar, who will be joining us virtually for sharing her views on the topic how social media is making us unsocial for the very first time. So please give us a big round of applause. Good evening, everyone. Myself, Shilpi Sahani. I am here to present a topic, how social media making us unsocial. Is it visible, sir? Yes. Yes, Shilpi, it is visible. Sorry, how it is. सर ये अब कैसे जाएगा? So I can. Excuse me, sir. LP press F5 for slideshow. So sorry for this network error. Good evening, everyone. Myself Shilpi Sahani. I will review on how social media is making social. So social networking is making us antisocial in many indirect and not so obvious ways. We have all heard the horror stories of social media. Problems like cyberbullying, sex scandals have latched themselves onto the idea of various social media mediums skewing their perception negatively. Today, we see that people have lots of friends with friend list consisting over hundreds of friends. But are they really friends? In this list, more than 50% of friends are those people whom we have never even chatted with, or a few percent also comprised of those whom we have never even seen. So social media also decreases face-to-face interaction because people these days find it easier to chat rather than talk to a person.
Often I hear complaints from my parents, my brother, that I am not giving them enough time. Almost all the time I just sitting on Facebook or Instagram, even though no one is there to chat with. All the time keep waiting for people, but I never realize that there are people who are waiting for me outside the social network world. Maybe the social networking has actually made me unsocial in real life. And there is another concept of FOMO, the fear of missing out. We are so intricately tethered to social media that we have established a psychological dependence on the network because of the compulsive concern of missing out on an opportunity of social interaction. It often results in anxiety, depression, because we are continuously concerned about missing out. And if we do, we may excuse to reach back. Now, this is very dangerous because companies, we are constantly finding more ways to keep you hooked on their sites, and we are becoming addicted to it. Social media sites have become a significant contributing factor to FOMO sensation. And excess use of social media have bad impact on our life through it facilitates laziness and lack emotional connection and many other ways. In the end, I will conclude that if we use social media in a strategic manner, it is very helpful, and it also helps to update knowledge. So as we all know, excess of everything is harmful, and let your emotional, physical, and mental capacities, skill sets into darkness. So use social media in a strategic manner, and that's, and thank you for listening. Am I audible? Can I go ahead? Now joining us virtually from Ahmedabad, Gujarat, we have Mr. Dinesh Hartani, who will be speaking on the topic audience interaction and essential of presentation. This man has accomplished various titles through the years, has won numerous awards in public speaking, is multiple times quiz winner, and is also a rank holder in CA Intermediate 2018 exams. He has also secured 13 times in CA final exams 2021, the results of which were out yesterday, and this has added another feather to his cap. So, ladies and gentlemen, please give a huge round of applause for our freshly being chartered accountant, Mr. Dinesh Hartani, who will be speaking on the topic audience interaction and essential of paper presentation. Am I audible? Yes, you are audible. And am I visible? Now you are audible. We can I'm hear you. audible and visible, right? I can go ahead. Yes, Devesh, you can continue. Thank you. Thank you so much. So, first of all, Sat Sri Akal Chandigarh. Thanks for the wonderful introduction, MOCs. And before I start, I want to actually thank the Chandigarh branch of ICAI for first inviting me to speak in this very session. And second, and the most important, for organizing this very event. I was actually conceiving this idea since very long because the awareness about paper presentations is very less amongst CA students. And this opportunity is actually a brilliant opportunity to take, given the fact that the general perception or the stereotype about the course chartered accountancy is that it is all about studies. And I believe the exact opposite of it, that although it is about studies as well, but it is not just about studies, it has many, many opportunities included in it. You could say the national talent hunt, which has the elocution or the quiz, or the student conferences, and many such more opportunities. So I'm very happy that the Chandigarh branch has organized such an event, and thanks again for organizing it and inviting me as a speaker. So starting with the first point, why should you go to conferences is a topic that
we could deliberate upon for like hours or so. But one of the most important points that I would like to say is that there is this element of networking. So obviously, there's a general perception that CA students lack soft skills. So by attending CA student conferences or specifically by presenting papers, the networking part is where you will actually improve upon. And I can say for sure that it is only because of this conferences that I have attended or presented papers into that I have been invited as a speaker in this very event. Now, coming to the topic, that is audience interaction being an essential of paper presentations. Before I specifically jump onto the topic, I want to talk about the prerequisites of an audience interaction. So basically, when will you be able to interact with the audience? The first is when you are thorough with the content. To be thorough with the content, you need to be thorough with your research. So one of the first prerequisites of the paper presentation or specifically of the audience interaction is you being thorough with the content or the research. So whenever you go to present a paper, make sure you are thorough with whatever topic you're presenting on. Second is, and the most important is, now obviously everyone of, there are two types of speakers. One, those who fear going on the stage, and second is those who lie. So every speaker will have an element of fear in him going to the stage. So how to have that confidence and speak fearlessly when you present in front of a crowd? And the one word answer that I could give you over here is practice. So obviously practice makes man perfect. I'd say you might not be the perfect, but you can obviously get better than yourself. And every time when I used to present a paper, I used to make sure that I practice at least 20, 25, 30 times before I go on to the stage to present my paper. I'll tell you the benefits that this has. So basically, when you have practiced enough, you remember the content, you know the flow, and that's how you will be able to speak flawlessly. And when you remember the flow, that is when you will be able to focus on the voice modulation or the emphasis part. Otherwise, what happens normally on the stage is when you go to the stage, your mind keeps recollecting what you have to speak next. When that happens, you'll not be able to focus on the voice modulation or the emphasis or the tonality part. So practice is the most important thing so far as paper presentations are concerned. And it is only when you practice well will you be able to interact with the audience well. And only when you practice well, you're confident and can you focus on several factors that are required for paper presentation. Moving on is how to practice basically. The thing that I used to do is I used to invite one or two friends of mine to my house and I used to speak before them. I will suggest never ever practice before the mirror. Because if you are practicing before the mirror, all you do is adore yourself in front of the mirror as to how good looking you are. So jokes apart, basically, when you speak in front of the mirror, you get conscious as to the way you are speaking. But when you speak in front of someone else, when you practice, that is when you'll actually get an audience. Obviously, it will be 2 or 3 people, but then that is when you'll stop getting conscious. So that is a suggestion that I would give over here. That is how you should practice. And I would say public speaking is an art and it will only come from practice. And each experience, the number of conferences that I would have attended, the first conference experience would have added to the second one and so on and so on. In fact, this session that I am presenting might add some experience that I shall take away for the next session that I might go for. So all I would say is, for sure you can get many experiences, but then you have to start somewhere. So you have to start taking part in such events. And obviously that's why I said that it is a very good initiative that Chandigarh branch has taken. Next is the stage fear. So basically people say that I'm fine with speaking with a crowd of maybe 20 in front of me, maybe 30 in front of me, but not with a bigger crowd. I'll tell you one thing out of my experience. I have presented in front of a crowd maybe as low as 50 and as high as 3,000 in the crowd. I have noticed there is actually no difference between the two numbers. It is only about the confidence that you take yourself with the stage on. You are not going to see each and everyone in their eyes when you speak. If there's an audience and there is you as a speaker, the only thing that you need when you go to the stage is confidence. So for audience interaction, obviously, like I said, the prerequisite is confidence. And I would say confidence is more of a mental thing. So what bothers you is maybe that what will people think when I fumble on the stage, when I stop, when I don't speak. So just one thing, this is something that you're doing for not yourself and not for those who are seeing you from the audience. Let them think whatever they have to. And so far as the fumbling part is concerned, like I told you, practice is what will make sure that you don't fumble on the stage and speak flawlessly. So when you go for a paper presentation, make sure that you go there with full confidence and
That's when that brings me to one more thing, and that is enjoy whatever you speak. Because when you enjoy whatever you speak, the audience will enjoy whatever you speak. And if you have to interact well with the audience, you have to make them enjoy whatever you speak. Unless they enjoy, they're not going to listen to you. And I can say that speaking is easy, listening is more difficult. I know you will say that this is very ironical, and you have heard that listening is a very easy thing. You have to sit in the audience and you just simply have to give a ear. And speaking is very difficult because you have to speak in front of a crowd. But then that's not the case. So far as speaking is concerned, it is easier for you to deliver a lecture. But the one who is listening, so probably right now it is easy for me to just go on speaking, but I don't know how much you are receptive to me, how much you are able to understand. So the listening part is very difficult, and that's when audience interaction comes to picture. And for this thing, I would say that audience interaction, you have to visualize yourself in the shoes of an audience, and you have to think as to whatever you are speaking, will the audience be interested into what you are speaking? How do you have to make it interesting for the audience to listen to you? And to, a perfect meal is incomplete without a starter or the main course or the dessert. Similarly, a perfect speech or a perfect presentation is incomplete without a good start, without a good body or the content, and without a good conclusion. So all the three elements of a speech are very important. And in each of the element, you can, make it relatable for the audience. If, for example, I started with wishing you all Sat Sri Akal Chandigarh. So that is one of the way that you could start with. There are many such ways. You could start with a quote, you could start with a greeting, but do make sure that whichever way you start with, the audience should be interested. They should feel that they want to listen to you. Make them feel that they want to listen to you. So have a very good start. Obviously, during the content, even if you start well, if you're not presenting well, if you don't make it relatable for the audience, they'll not give you a ear. So you have to make sure that time and again you deliver relatable content. And like I said, you have to step into their shoes to know whether the content is relatable for them. I might give an example of a case law of the recent ruling of the Supreme Court of certain tax law. But then my audience, being maybe intermediate students or the final students, might not have heard about that case law. So I need to make sure if the audience knows about that particular thing or not, and then again present it in a relatable manner to them. Next, I would say is your end, that is your conclusion, should be such that throws an awe or a wow factor. People should actually bring an applause to when you end speaking, and they should feel, yaar, isne bolna band kyun kar diya, we want to continue listening. And there's a misconception about audience interaction, and that is that audience interaction is a two-way thing. It is a conversation or it is a dialogue. But I would like to say it is not the case. Audience interaction, see, basically paper presentations are just about you presenting it in front of the audience. It is sort of a monologue. It is not a two-way conversation. So I would say audience interaction is not you probably speaking to the audience. It's not a conversation. But then it is an interaction through your expressions, through your body language, through your eye contact, through your content. Like I said, if you present relatable content, then that is when audience interaction comes into picture. And I would say question answers could be one form of an audience interaction, that wherein you can throw questions to the audience and seek answers from them. But then the one thing about question answers is you should never expect the audience to give the answers. A simple yes or no answer or simple show of hands could be something that the audience might be receptive to. But if I ask a technical question to you, asking law mein, which is this section, I cannot expect the audience to answer that. So when you are a paper presenter, there's a skill of asking questions. So I might say, can you take a wild guess as to India's ranking in the ease of doing business? I'll take a pause. I cannot expect you to answer me with the exact rank. Obviously, one or two might actually go ahead and answer me. But then what I do is I take a pause, and after 2 seconds, I say, it is maybe say 10th in the list. So that's how you need to do. That is interacting with the audience without actually interacting with them. And the next point I would say is and the most important point again, I feel, is you should be unique. So if probably I started with greeting you as Sat Sri Akal Chandigarh, you may not come to the stage and say the same thing. Everyone has their own uniqueness, has a different way of presenting, and everyone has a different voice. So a particular style might suit me, but it might not suit you. So never ever try copying other paper presenters. Obviously, you can take guidance from other speakers, but you have to develop your own unique man. There is no thumb rule.
every way of speaking is good so far as you are able to make the audience understand what you are saying. So that's it from my side. I think I hope I have delivered justice to this topic. Once again, thanking the Chandigarh branch for organizing this webinar. I want to congratulate all the participants who actually participated in this event. This is a very good start. I really hope that you take part in future conferences and win there as a paper presenter or at least present on the stage. All the best for your future. Thank you. Signing off, Divesh. Thank you so much, CA Divesh, for sharing your valuable knowledge with all of us. Now, please welcome Ms. Priyanshi Jain, a CA final student hailing from Ahmedabad, Gujarat, putting light on the topic, basis of selection of topic for presentation of paper. She has won the title of Best Paper Presenter more than once and has even represented ICF at the Virtual International CA Student Conference in 2021 in Colombo, Sri Lanka. She will be joining us virtually. Is my screen visible? Yes, Priyanshi, you can go ahead. Okay. A very good evening to everyone present in the seminar physically and all the people who are connected virtually. I, Priyanshi Jain, from the city of Ahmedabad, is really grateful for the Chandigarh branch to welcome me as a speaker in this session. The topic we are going to be focusing on right now is the basis of selection of the topic for paper presentation. On the road to achieve a good paper presentation, the fundamental step is the selection of the topic. How to change the slide? Okay, got it. For a good paper presentation, a fundamental step is a good topic. A topic in which you are comfortable, a topic in which you think that you can deliver the best. Then how will you identify which topic is good for you, which one is made for you? While framing the schedules of the conference, each of the branch thinks that the topic has to be unique, better, and proper so that all the audiences they are going to look forward to is interested and get registered. So at first instance, at first glance, you'll think that all the topics are really interesting and you'll feel like all the topics are really nice and which topic I have to do. You'll get confused even more if you'll see and go through various topics in first instance. So it is really important for you to think which topic you are specialized in. So you have to see which topic is simple to understand and simple to explain. Both the things are different, which is simple to understand to you and you are able to explain it to others in a simple manner. So what do you mean by simple? Here, simple doesn't mean an easy topic or a less complex topic. Simple is a subjective term. Mr. A may feel tax as a simple subject. He may think that tax is really simple and he is understandable in that. But Mr. B may think that he has an upper hand in audit, and he may think that he has an upper hand in audit and he can explain audit easily. So simple is a subjective, one which is complex to others may be simple to you. So you have to identify on what you are comfortable with. So how will you consider which of the 10 or 15 topics which the branch have given in the brochure is comfortable for you and in which you will excel? So first thing, as a layman, if you ask someone kaun sa topic lu, they'll say that the one you score well, the one you get understand well in lectures or something, you take that subject. So first barometer to think which topic is good is your marks, is your scoring. But again, I'll say that marks is not the only thing which can get you the way you are with the topic. The conceptuality, the understanding is another thing. You may not score well in that subject, but you may have
a vast experience in that topic in your practical field. In your articleship, you have seen the topic, you have seen that subject in a practical manner. Others may not have. You have an experience, an edge over others, which others may not have. So you have to see whether what you are learning right now, and in which topic, if you are questioning something, in which topic you are going to answer it fast, not like not answering like no one is going to ask your questions there. But if you are been asked something about the topic, in which topic you are the most comfortable and most easily answerable. So now this was from your viewpoint of view, that what do you think of the topic in which you are comfortable or not. But now let's think from getting selected point of view. What topic, if you select, will get selected? So now you have to see that which topic is more popular among other people. Like if there is a topic in relation to communication, so people think that communication is an easy, I can cover it, I can speak on it. But communication, my friend, is a really tough topic. And in that, if you are on the stage, you are the live example of communication. Like you have to be perfect in that topic in order to be the most perfect person to present that topic. So popularity of the topic doesn't matter. Many will send a paper on it, but you have to be generically not expert in it, but you have to be specifically expert in it. Like if you are choosing a topic which is really popular, but you have an edge over others and you think that you have seen what others have not, then you can go for it and you can get selected on it. So don't think that if a topic is popular, you'll not be able to get selected. And considering the complexity of the topic, you'll feel like this topic is really complex. No one is going to select it. And if I will send paper on it, I'll get selected. Even if only 2 people will send a paper, and if you don't have an idea of the topic, the other person who is having the idea will get selected. So having less people sending on the same topic is not a criteria to be considered. So from selection point of view, if you're thinking, that is one of the factor that cannot be the most important factor of selecting a topic. So here I'll say I have little miscellaneous points to point out, 2 or 3 points, and then I'll conclude my topic, so that I feel you have got whatever I have till now of attending conferences, various presentations, and presenting various topics at various places. I have gathered a little experience from each and every presentation I have given, and I'm still learning the things. Today also I'll learn a lot. So I have gathered one thing is, I have an understand that don't judge a book by its cover. The topic which you think is uninteresting is not really uninteresting when you dig into it. So if you think that you are confused between 2 topics, that this topic seems interesting to me and this topic is not that appealing to me, but go for a day research in that topic and go for a day's research in another one as well, and just think about it, just read about it. If you get interested in it, dig into it, you will get more interested in some topics. Just like if I'll say I presented in a Ahmedabad conference on the topic infrastructure. So I thought infrastructure is really boring topic and no one is going to listen to me. But when I dug into it, I saw that it has really great potential and it is a topic which is really undiscovered. So at times you think that this is not my forte or I'm not going to do it well. But when you dig into it, when you read about it, when you research about it, you feel like researching more and more. And that's when you think that the topic you are finding is the right there in front of you. Another one is eating too much is really harmful, but eating too little is also boring. So if you think that my chances of selection will be high if I send more and more papers, then you are wrong, my buddy, because
your efforts in each paper you send will become really less. So thinking about that, if I'll send 2 or 3 papers in the same in the same conference, then I'll get selected at least in one. But the effort you are going to put into the one paper with fully prepared will divide into 3. So the quality of the paper will also degrade. Also, you can't compensate the quality over quantity. So eating too much is really harmful. We are being taught this since childhood. So sending a lot of paper will not make you achieve the goal you are going to. So in order to get selected, you have to research properly and thoroughly for one topic. And in that topic also, you can't be lethargic. You have to read about each and every aspect in order to get selected. So eating too little is also boring. So not researching a lot will also not lead you anywhere. So I would again thank Chandigarh branch and everyone listening to my presentation so patiently to be the part of my this 10 minutes long journey. Thanks a lot for being a great audience. Thank you so much, Priyanshi, for sharing your valuable knowledge with us. Moving further, we have another CA finance student from Ludhiana joining us virtually who has rich experience in handling and dealing with various insolvency cases. Apart from personal CA, he has also been a motivational speaker. So, ladies and gentlemen, please welcome Mr. Akshat Maheshwari, who will be speaking on the topic drafting and formation of paper for presentation. All right, thank you, MOC. And first of all, to begin with, I would like to thank the chairman of Chandigarh branch of Karsar and the hardworking team members of Chandigarh branch for giving me this opportunity. I have been assigned to give my viewpoint on the topic formatting and drafting of papers for paper presentation. And by the end of it, I'll share 1 or 2 papers of mine with all of you for reference purposes. तो देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पेपर्स होते कितने तरह के हैं. तो एक होता है रिसर्च पेपर, एक होता है हम जो कॉन्फ्रेंसेस के लिए पेपर बनाते हैं. दोनों के फॉर्मेट में बहुत फर्क है. तो आज हम यहाँ पर जो टाइम है अलॉट किया गया उसमें हम पेपर प्रेजेंटेशंस के फॉर्मेट के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे. See, you need to understand that CA student conference, if you're trying to participate as a paper presentation, as a paper presenter, you have to draft your paper in a very professional manner. It should not feel like a 12th standard project where just you draw coloring things and all that. ऐसा नहीं करना. You have to be very professional in your approach while drafting your respective paper. इसके कुछ की पॉइंट्स होते हैं, बड़े बेसिक से पॉइंट्स हैं ड्राफ्टिंग करने के, जो हम आम मर्रा की जिंदगी में मिस कर देते हैं. हम आर्टिकलशिप में भी वो चीजें देखते हैं. इस पहला पॉइंट होता है आपका पूरा पेपर जस्टिफाइड अलाइंड होना चाहिए. ना राइट, ना लेफ्ट, ना सेंटर, जस्टिफाइड. आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट द हेडिंग्स बट द कंटेंट अंडर द हेडिंग्स. इट शुड बी जस्टिफाइड अलाइंड. जो आपकी हेडिंग्स हैं टॉपिक की, वो आपकी राइट साइड पर या सेंटर पर हो सकती हैं, प्रोवाइडेड वो टॉपिक के हेडिंग की इंपॉर्टेंस कितनी है. इफ इट इज द मेन हेडिंग, you can have it as in the center of it, and if it is sub heading तो वो आप लेफ्ट साइड पर लिख सकते हैं, जैसे हम नोट मेकिंग में किया करते थे बचपन में. जब आप स्कूल में होते थे, लेफ्ट साइड पर सब हेडिंग होती थी, मेन आपकी जो हेडिंग थी वो सेंटर में होती थी. तो जस्टिफाइड अलाइंड हो गया और उसके बाद हेडिंग्स का हो गया. इसके बाद आपको पेपर ड्राफ्ट करते हुए, अब जैसे आप I can see 60 participants, more than 60 participants are there. अगर मैं आपको टॉपिक दूं अभी के आपको अपील्स एंड असेसमेंट्स अंडर जीएसटी के ऊपर अभी पेपर बनाना है, तो देखिए आपको टॉपिक को समझना बहुत जरूरी है ड्राफ्ट करने से पहले, कि इसमें अगर आप सबको मैं दूं तो आपके इंटरनेट पे नहीं भागने जाने वाले. सबका कंटेंट डिफरेंट नहीं होगा, सबका सेम कंटेंट होगा, बिकॉज टॉपिक ऐसा है, इसमें कोई वैरायटी नहीं होगी कंटेंट को लेकर.
तो अब कंपटीशन आप 60 के बीच में है, बच्चा एक सेलेक्ट होगा, तो वो सिलेक्ट कैसे होगा? उसकी ड्राफ्टिंग के बेसिस के ऊपर। आपका कंटेंट प्रोफेशनल दिखना चाहिए, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल आपका जो कंटेंट का टेक्स्ट होता है, फॉन्ट साइज शुड बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द पेपर। एंड हम प्रोफेशनली बात करें तो प्रोफेशनली फॉन्ट साइज 11 या 12 होता है, ना 14, ना 16, ना 8, ना 9। 11 और 12 आपके प्रोफेशनल साइज होता है वर्ड फाइल में टेक्स्ट का, और वो यूनिफॉर्म होना चाहिए थ्रू आउट द पेपर। ऐसा नहीं कि मेन हेडिंग 14 की, कंटेंट के उसके 14 के, फिर नीचे मेन टॉपिक शुरू हो गया 12 कर दिया, फिर इसका 8 कर दिया। आप नीचे नोट लिख रहे हैं, जैसे हम कई बार कहते हैं ना कंटेंट के नीचे नोट लिख रहे हैं, तो उसका छोटा कर दिया। या आपका मेन हेडिंग 12 का, आपने नोट ताकि वो एम्फेसिस हो तो उसको 14 कर दिया। वैसा काम नहीं करना है आपको। अपना थ्रू आउट द पेपर जो आपका फॉन्ट साइज है वो सेम रखना है। सेम थिंग गोज विद द फॉन्ट नेम। ऐसा नहीं कि एक पैराग्राफ एरियल ब्लैक का है, दूसरा टाइम्स न्यू रोमन का है, तीसरा कैलिब्री का है। वैसा नहीं करना। आपका जो पेपर का फॉन्ट नेम है वो थ्रू आउट द पेपर सेम होना बहुत जरूरी है, वरना वो बहुत ही अनप्रोफेशनल लगता है। तीसरी चीज, आप ना जब वर्ड फाइल ओपन करते हैं, सबसे पहले आपको होम टैब आती है सबसे ऊपर। होम टैब के राइट साइड पे आप बहुत सारे ना वो सर्कल्स स्क्वायर से देखते हैं, ए वाले, जैसे कुछ हेडिंग होते हैं, आप क्लिक करते हो तो वो हेडिंग साइज आ जाता है, बॉडी टेक्स्ट साइज आ जाता है, ठीक है। तो वो आपका यूनिफॉर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक के लिए तो आप वो राइट साइड पे वो आप हेडिंग चूज कर लिया, दूसरे में आपने उसको बॉडी कॉन्टेक्स्ट चूज कर लिया। वो चीज का भी ध्यान रखना है कि वो चीज आपकी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। एंड आप जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डिफरेंट वर्जन यूज करते हैं तो हर वर्जन में वो चीज बाय डिफॉल्ट डिफरेंट होती है। तो आपको उस चीज का पेपर शुरू करते वक्त ध्यान रखना है कि वो चीज आपको यूनिफॉर्म रखनी है। अगली चीज जिस बात का आपको ध्यान रखना है वो है स्पेस विद इन द लाइन। ऐसा है, अब आप वर्ड फाइल में आप एंटर मारते हैं, आपकी लाइन एक नीचे जाती है। आप किसी और की वर्ड फाइल देखेंगे वो इतनी ज्यादा स्पेस नीचे चली जाती है, आपको समझ नहीं आता है इतनी स्पेस क्यों आ रही है, बहुत ही ऑकवर्ड स्पेस है, मेरे को नॉर्मल स्पेस चाहिए। तो आप जब होम टैब में देखते हैं आपके पास एक स्पेस की ऑप्शन होती है, आपको वो स्पेस का जो लेवल है 1, 1.5, 2, आप तो कस्टमाइज भी कर सकते हैं उसको 1.15 या जैसे भी, वो आपका यूनिफॉर्म होना चाहिए। हेडिंग और उसके जो कंटेंट है नीचे उसका स्पेस आपका यूनिफॉर्म होना चाहिए। और कंटेंट के बाद जब आप नेक्स्ट हेडिंग शुरू कर रहे हैं वो स्पेस आपकी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हेडिंग और उसमें एक पैराग्राफ में 1 पॉइंट हेडिंग डिफरेंस है स्पेस का, अगले में 2 पॉइंट डिफरेंस है, किसी में 1.5 डिफरेंस है। आपको देखिए वो पता चल जाता है पढ़ने वाले को कि डिफरेंस है, ये यूनिफॉर्मिटी नहीं है। ये मत समझिए कि सिलेक्शन करने वाले को नहीं पता चलेगा, वो देखते पता चल जाता है उस चीज का कि वो डिफरेंस है। ये बेसिक चीज है जो आपको याद रखनी है। इसके बाद पेपर बनाते वक्त जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है यूज ऑफ स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट और शेप्स। आपके पास वर्ड में आप इंसर्ट टैब में जाते हैं, यू हैव द स्मार्ट आर्ट ऑप्शन। आपका कोई प्रोसेस है, आप उसको सिंपल लिखने के बजाय पहले स्मार्ट आर्ट से एक्सप्लेन कीजिए कि एक प्रोसेस, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कोई स्मार्ट प्रोसेस हो गया तो उसका ऑप्शन आ जाता है स्मार्ट आर्ट में। अब जैसे मान लीजिए अपील्स एंड जीएसटी में आपको 5 या 6 अथॉरिटीज होती हैं जहाँ पे अपील्स जाती हैं, तो उसको आप पहले ऐसे कर सकते हैं, एक सर्कल बनाकर स्मार्ट आर्ट में, एक सर्कल के थ्रू सेंटर में उसको ज्वाइन करके आप उसको वैसे एक डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन कीजिए कि आप अब ये जो हेडिंग है इसमें आप एक्सप्लेन क्या करने वाले हैं। उस स्मार्ट आर्ट के बाद आप अपना मेन कंटेंट शुरू कीजिए। जहां पर भी डायग्राम यूज होता है, देखिए इस चीज को समझिए, पेपर सिलेक्टर के पास ना इतना टाइम नहीं होता कि वो अगर आप 50-60 पीपल भेजेंगे वो एक एक का पेपर पढ़ने बैठेगा। ही इज नॉट दैट मच फ्री। जैसे आप रिज्यूमे में पढ़ते हैं ना, आपका रिज्यूमे बड़ा वो 10-15 सेकंड लगाता है जो एचआर का बंदा होता है सिलेक्ट करने में कि किसको इंटरव्यू करे, सेम इसमें होता है। द सेलेक्टर इज नॉट गोइंग टू रीड योर होल पेपर, ही हैज वेरी लिमिटेड टाइम टू रीड। आप जितना उसको प्रेजेंट अच्छा से करेंगे, स्मार्ट आर्ट यूज करके, डायग्राम यूज करके, पाई चार्ट्स, हिस्टोग्राम हो गया, बार चार्ट्स हो गए, वो उतना ज्यादा अच्छा लगता है दिखने में। उतना जल्दी उस पर्सन को लिमिटेड टाइम में आप जो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहे हैं अपने पेपर में वो ग्रास्प हो जाती है उसको। उस चीज का ध्यान रखें, आपका पेपर डल नहीं होना चाहिए। आपके पेपर में स्मार्ट आर्ट हो गया या शेप्स होगी, जैसे एरोज हो गए, सर्कल हो गए, स्क्वायर हो गया, आप कोई बॉक्स एक्सप्लेन कर रहे हो, स्क्वायर बना के कर दिया,
तो वो चीजें आपके पेपर में होनी जरूरी है। सबसे जरूरी बात पेपर बनाते वक्त ये है कि आपके पेपर में कवर नोट होना बहुत जरूरी है। आप वर्ड ओपन करते हैं, साथ के साथ लिखना नहीं शुरू कर देना। आप कवर नोट होना बहुत जरूरी है पेपर ड्राफ्ट करते वक्त। कवर नोट इज जस्ट यू कैन हैव अ हेडिंग ऑन टू इट एंड प्रेजेंटेड बाय दिस एंड दिस, लुधियाना से एनआरओ, यू गिव योर फोन नंबर एंड एवरीथिंग। वो कवर पेज होना बहुत जरूरी है। आप जब एब्रप्टली फर्स्ट पेज से शुरू कर देते हो बहुत एब्रप्ट लगता है। That's not how we as a professional present our presentation or present a paper on that. It has to have a cover page. And इसके बाद जो next important चीज आती है header and footer. Footer पे including page number on header or footer, or having the title of the content as a header. ये चीजें आपके पेपर को एक ग्रेस देती हैं कि आपके पेपर के हेडर और फुटर की स्पेस खाली नहीं है. It is filled up with something. Either the heading of the content or at the footer you can have the page number as well. Page number बहुत जरूरी होते हैं, उसको आप मिस नहीं कर सकते पेपर को ड्राफ्ट करते हुए. तो वो चीज का स्पेशल ध्यान रखिए कि हेडर आप रख सकते हैं, आप उसमें हेडिंग यूज कर सकते हैं, जो आपका टाइटल है वो अच्छा लगता है दिखने में कि आप स्पेस प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर रहे हैं विदाउट मेकिंग इट हॉच पॉच. वो आप होते हैं ना, कम स्पेस में आप ज्यादा इन्फॉर्मेशन भर दो, दिखने में भी अच्छा नहीं लगता, वो ऐसा नहीं लगता. It gives a very graceful look to your paper. Next important चीज, हमारी ह्यूमन साइकी ये है कि हम बड़े ऑड वन आउट चीजें बड़ी जल्दी पिक कर लेते हैं. अब हम वो गेम्स भी खेलते होते थे ना, 4 में से 4 ऑप्शन होती है, पिक दी ऑड वन आउट, वो गेम होती है ना, सेम इसमें होता है पेपर प्रेजेंटेशन की ड्राफ्टिंग में. आप अगर चाहते हो कि कोई ऐसा पॉइंट है आपके पेपर में जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि रीडर अगर सारा पेपर नहीं पढ़ सकता तो कम से कम ये पॉइंट तो जरूर पढ़े, ये पॉइंट आपके पेपर का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो आप उसको बोल्ड कर सकते हैं, इसमें अंडरलाइन कर सकते हैं, उसको एक डिफरेंट कलर दे सकते हैं, जस्ट बिकॉज के वो ब्लैक कलर के अंदर वो ऑड वन आउट करके वो उस चीज को देखे, उस चीज को वो एकदम से फर्स्ट इंस्टेंस में वो पढ़े. मैं आपके साथ 1-2 ड्राफ्ट पेपर शेयर करता हूं. आई जस्ट शो यू समथिंग. Is the share screen visible to everyone? Is it visible to everyone? Yes, it is visible. All right, all right. See, this is just a draft paper. इसको आप वो ना समझिएगा कि ऐसे करेंगे तो ही select होगा. I'm just sharing it with you for reference purposes. So मैंने ये एक पेपर बनाया था, ये मेरा कवर पेज है, अपील एंड असेसमेंट इन जीएसटी. आप देखिए इस टॉपिक बड़ा लिमिटेड कंटेंट है, सेम सेक्शन है, सेम सब कुछ है. आप सारे बनाने जाएंगे कोई वैरायटी नहीं मिलेगी आपको कंटेंट में. तो आपका ये चीज कंफर्म्ड है कि अगर आपका पेपर सिलेक्ट होगा तो वो कंटेंट के बेस पर, और एटलीस्ट आप अगर इंफॉर्मेशन सारी कवर करेंगे तो ही वो चीज आपकी होगी. यहाँ पर ऊपर हेडर है, मैंने हेडर में वो हेडिंग वगैरह दे दी है. नीचे मेरा यहाँ पे फुटर में पेज नंबर है. ठीक है, इसके अलावा जो मेरी मेन हेडिंग्स है उसको मैंने टैब बॉक्स की फॉर्म में हाईलाइट करने के लिए दैट दिस इज माय मेन हेडिंग, उसको ऐसे दिखा के नीचे नॉर्मल कंटेंट अपना रखा है. कंटेंट इज माय कैलिब्री बॉडी एंड माय फॉन्ट साइज इज 12. दैट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द माय पेपर. ठीक है, इसके बाद अब जैसे मैं स्मार्ट आर्ट की आपसे बात कर रहा था, अब देखिए ये सेक्शंस आपने इसमें एक्सप्लेन करने हैं. तो रादर देन कि मैं पहले सीधा ही शुरू हो जाऊं सेक्शन ये सेक्शन ये सेक्शन ये, it is better that I show to the selector that this is a smart art that I am using and this is the topic that I am going to discuss in my paper. At least उसको इतना कवर हो जाता है सेलेक्टर को कि इस बच्चे ने इस टॉपिक में ये कंटेंट कवर किया. ठीक है, इसके बाद यू स्टार्ट प्रेजेंटिंग इट. अब ये आपकी सब हेडिंग है, सब हेडिंग आपकी बोल्ड में है, उसके बाद नॉर्मल कंटेंट है, उसके बाद जैसे कोई प्रोसेस है तो यू नो जस्ट एक एरो आ गया प्रोसेस का कि इसको आप ऐसे कर सकते हैं. ठीक है, इसके बाद अब जैसे ये सब हेडिंग की भी सब हेडिंग है, तो रादर देन कि मैं सबका फॉर्मेट जो फॉन्ट कलर है वो ब्लैक रखूं विच गिव्स अ वेरी मोनोटनी लुक. ठीक है, मैंने उसका कलर रेड कर दिया. इस हेडिंग का फॉन्ट, हेडिंग इज ऑन द बॉक्स, सब हेडिंग इज ऑफ ब्लैक बोल्ड एंड उसकी भी सब हेडिंग इज ऑफ रेड कलर, ताकि जो रीडर है उसको डिफरेंस पता लगे कि ये मेन हेडिंग है, ये सब हेडिंग है, ये उसकी भी सब हेडिंग है. इसके बाद अगर और भी कोई सब हेडिंग होती तो उसका वो चीज डिफरेंट हो जाता.
तो ऐसे करके सारा पेपर सिंपल है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे अपील्स हैं, तो आई जस्ट ड्रू अ बॉक्स के मैं इस टॉपिक के अंडर इन अपील्स, ये जो 6 ट्राइब्यूनल्स हैं या जो अथॉरिटीज है, इनके बारे में मैं पेपर एक्सप्लेन करने वाला हूँ अपने उसमें, ठीक है। तो एक चीज का ध्यान और रखिएगा कि आपके पेपर में जो है कंक्लूजन का होना बहुत जरूरी है। आप बिना कंक्लूजन के पेपर कभी मत सबमिट कीजिएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आप चाहे कोई भी टॉपिक हो, थ्योरेटिकल हो, प्रैक्टिकल हो, लीडरशिप जैसे जनरल टॉपिक्स हो, आपका कंक्लूजन का होना बहुत जरूरी है आपके पेपर में, ठीक है। उस चीज का ध्यान रखिएगा। एंड लास्टली, व्हेन यू गो थ्रू योर पेपर, ट्राई टू, आप उसको कोई भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप नीचे नोट लिखते हैं, उसको एक, आप अगर चाहते हैं कि रीडर उसको कैच करे उस चीज को, तो आपको उसको डिफरेंट, आप वो बोल्ड इटैलिक्स हो गया या कलर चेंज हो गया, वो चीजें आप कर सकते हैं अपने पेपर में। तो दिस इज द वे यू ड्राफ्ट अ पेपर, बट मेक, ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर इज नॉट अ परफेक्ट वे ऑफ ड्राफ्टिंग अ पेपर। यहाँ पे 60 बच्चे हैं, सबका ड्राफ्टिंग का पेपर सिस्टम अलग होगा, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ एक की होगी। दैट डजंट मीन कि बाकी बच्चों का एक ड्राफ्टिंग खराब थी, ऐसा कभी नहीं होगा। एंड ऐसा भी नहीं होगा कि आप हर कॉन्फ्रेंस में अगर आप पेपर भेजे तो आपकी जिसमें भेजेंगे सिलेक्शन होगी, ऐसा कभी नहीं होगा। देर आर गोइंग टू बी सम टाइम्स कि आप पेपर भेजें, आपका सिलेक्टिव नहीं होता, आपको लगता है ऐसा भी क्या हो गया, ड्राफ्टिंग में क्या गलती कर ली कि नहीं हुआ सिलेक्ट। तो देर इज नथिंग टू बी वरी अबाउट। आप अपने सीनियर्स या मेंटर्स के पास जाइए, उनसे पूछिए कि ऐसे यार ड्राफ्टेड माई पेपर, इसमें क्या दिक्कत है, तो दे गाइड यू वेरी वेल। इसमें आप पेपर में एक और चीज ध्यान रख सकते हैं, आप फोटोज का यूज कर सकते हैं, बट इट नॉट हैज टू बी लाइक आप स्लाइड बनाते हैं ना, वैसा नहीं करना। 2 to 5 फोटोज आर मोर देन इनफ इन अ पेपर। ज्यादा फोटोज भी यूज नहीं करनी है, ठीक है। आपने जैसे इंट्रोडक्शन में एक फोटो लगा ली, कंक्लूजन में लगा ली, अब आप कोई फ्रॉड का टॉपिक समझा रहे हैं तो किसी, आप गूगल पे जाते हैं, उसकी लगा ली कोई प्रोसेस, वो 2 to 5 इमेजेस आर मोर देन इनफ इन अ पेपर। वर्ड लिमिट अब आप देखते हैं कॉन्फ्रेंसेज में 1500 to 2000 वर्ड्स की होती है, ठीक है। आप 2100, 2100, 2200 तक जा सकते हो, ठीक है, बिकॉज वो रीडर भी समझता है कि 2000 के अंदर कन्फाइन करना टॉपिक को बहुत मुश्किल होता है। हम प्रेजेंटर्स के लिए भी, वी एज स्टूडेंट्स, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कन्फाइन इट बिटवीन दोज वर्ड्स, बट बीइंग प्रोफेशनल हम 100 to 200 एक्सीड कर सकते हैं। दैट डजंट मीन कि आप 2000 के 3000 कर देंगे या 2000 के 2500 से ज्यादा वर्ड्स कर देंगे, ये गलत चीज होगी। 100-200 वर्ड्स की लिमिट आप बढ़ा सकते हैं, बट यू नॉट हैव टू मिस यूज दैट कि आप कंटेंट पे कंटेंट लिखी जा रहे हैं, लिखी जा रहे हैं, वो 4000 वर्ड्स तक चला गया, ऐसा नहीं करना। वो अब वहां पे क्या होता है, आप पीडीएफ फाइल भेजते हैं, पीडीएफ में अब आप सोच रहे होंगे वर्ड लिमिट तो आती नहीं उसमें, एग्जाम वो सिलेक्टर को क्या ही पता चलेगा कितने वर्ड्स हैं, वो देखने से ही पता चल जाता है कि कितने वर्ड्स हैं, इतना एक्सपीरियंस होता है उन्हें। तो आप ये मत सोचिए कि उन्हें बेवकूफ बनाया जा सकता है, हम वर्ड्स ज्यादा लिख देंगे या कम हो जाएगा, कम भी लिखते हैं वो भी पता चल जाता है। 1500 से कम लिखेंगे ना, हमें वो जो सिलेक्टर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस के, उन्हें वो भी पता चल जाता है। तो ट्राई कि आपका 1500 to 2000 वर्ड्स में कन्फाइन हो जाए। इन केस नहीं भी होता तो आप 100-200 वर्ड्स एक्सीड कर सकते हैं। इट इज एक्सेप्टेबल, इट इज अलाउएबल इन एवरी कॉन्फ्रेंस, nobody is going to disqualify you on that purpose. These are the main common points that give you an edge over the other competitors on your topic. कई बारी बच्चे देखते हैं जस्टिफाई नहीं करते हैं, जस्टिफाई एक बड़ी बेसिक चीज है, हम ऑफिस में भी जस्टिफाई करते हैं, कई बारी बच्चे करना भूल जाते हैं, उस करके वो रह जाते हैं। तो आप ये बेसिक चीजों का ध्यान रखेंगे। इसमें देखिए क्रिएटिविटी बहुत है पेपर बनाने में, आप किसी की क्रिएटिविटी को नहीं रोक सकते। मैंने ऐसा बनाया, क्या पता आप में कोई क्रिएटिव आइडिया मुझसे भी बेटर बना ले, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट माय टॉपिक, एंड अगेन आई लाइक टू थैंक चंडीगढ़ ब्रांच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, एंड आई होप आप सबको ये बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा सेशन। सो थैंक यू वंस अगेन एवरीवन, थैंक यू। Thank you, Akshat Maheshwari, for sharing your knowledge and rich experience. We all learned much of stuff. Moving further, gracing us with knowledge over the topic, skill set requirement for PPT and sample video, we have amongst us Ms. Muskan Minda, hailing from Kolkata, who has, apart from the academic world, been doing her part
by visiting over 3 schools in West Bengal, has also assisted in structuring of the social and initiative and has raised awareness about child education. She has also headed mentoring sessions to new students. She has been a paper presenter thrice. She will be joining us virtually. Hello, am I audible? Yes, you are audible, Muskan. Okay, thank you so much for the wonderful introduction. So, honestly, today I'm present here because I have had the first-hand experience of how impactful and game changer a presentation can be. I have presented my first paper in the conference that happened in Chandigarh itself on the topic blockchain technology. After my selection, I got the chance to meet the committee members. I got to know that there were 50 plus applicants on my topic alone. And can you guess the reason why they selected me? It was because of my PPT. Yes, my PPT. It gave me an edge over the other participants. That day, I realized that PowerPoint presentation also plays an important role in paper selection. I am sure that till date, you all must have witnessed a PPT, whether in your IT or OT or MCS or in your office as well, which just seems a little off or a little boring, if I might say. And you all must also be waiting for it to finish fast. But frankly speaking, this happens because people don't pay much attention to the basic details while preparing it. So now I would like to take this opportunity to present certain key elements one should know while preparing a PPT and the basic do's and don'ts, which have tried and which I have tried myself and tested. And through the experience of others also, if I have presented, we get to know from them as well what has worked from them and what has worked for others as well. So here it is. So in a presentation, the first thing that one notices is the font and the font size. Your text should be easy to read and it should be pleasant to look at. Hence, the preferred font size for headings should be from 36 to 44, depending upon the font that you are choosing. And the content should be around 18 to 22. The next important thing on which very few people work on is the background. Formatting background instantly helps to enhance the look of the PPT. If you prefer background as solid colors, you can use colors like black, gray, etc. But personally, I feel that formatting any background using the images and the gradient fill in the format background option can be very helpful. Just make sure that when you choose the text and the background, these two should complement each other and not contradict. You can also use themes to make the PPT work because themes are inbuilt Microsoft Office characteristics for presenting a good background. You can use that. Next, next. So after that, you have to focus on your structure content. So what happens is that there are a lot of people who include a lot of explanation and text in the PPT. And there is this important fact that before doing this, you should be knowing this, that when the audience is hearing and reading the same thing, it becomes a little monotonous for them. And no one wants to waste their time by sitting there and reading the same thing. So to help to solve this problem, you can do this, that you can include just the keywords or the talking points or the graphs and images in your PPT instead of writing whole big sentences and explanation. This makes the PPT look a bit catchy and attractive. And it also gives it a professional look since you are the one explaining it and all the key information is present in the PPT. Moving on, I will just like to tell you all how the content should be presented. So what happens is that if your topic is faceless assessment, you can start by introducing the topic. Then, as mentioned by Akshit, he showed you all the way the paper should be written, the key pointers that should be mentioned.
then the latest reforms and everything you can add over there. And finally, you must conclude. Even in the PPT, you have to follow this format. This is a must for a PPT as well, because this is what you would be presenting in front of the audience. Now, in PPT as well, you have to make sure that you don't use bullets. Using smart arts just give you the extra look that the PPT needs. Now, to keep your audience from being overwhelmed, you should also keep the text on each slide short and to the point. Try to convey one message per slide, because that way your message becomes more effective. Knowing your audience is very important, and for you, it is the CA students who are attending the conference. So be aware of the topic and try to make the topic very simple and understandable. You can also use clips and small videos in the PPT to convey a point. I know that the today's generation is a memes and GIF generation, but be careful. The same goofy effects and the clip art that would entertain an entire classroom normally, this thing might look a bit unprofessional in front of the business colleagues and the clients and the professional setting you are sitting in. So don't put any such content which may be offensive to anyone, and don't make any political statements on the platform. Also, make sure that you don't overload your presentation with animations. Use simple animations, as it gives the presentation a professional look. A fair disclaimer: whenever you make the presentation, give it to the organizing committee beforehand to run it for you. Check whether all the slides are in order, the video or the GIF you are adding is playing. Check whether the animations are working or not. Because many times what happens is that due to technical glitches, these issues pop up. I would like to share a true incident during a paper presenter. During the paper presentation in Chandigarh itself, what happened was that due to some technical difficulty, the PPT suddenly stopped. And so the person had to think on the spot to what to do next, because we have a very limited time frame on the stage. Like we have just 12 to 15 minutes for the presentation, and the amount of time that was left for him was just 5 to 7 minutes. And the person who was controlling the presentation, he told him that to restart the system it would take around 5 minutes. So at that moment he had to decide, and he chose to not run the presentation again, and he had to just continue with the speech without the presentation. So even if certain glitches like this occur, you don't have to panic, and you have to be prepared for such things as well, that these things might happen and it's normal. So this is all about the presentation. At the end, I will show you some PPTs to give you a better look at what all points I was talking and how it makes a huge difference. Moving on, now I would like to talk about the presentation of the sample video. As we all know that the first impression is the last impression. This sample video is your chance to create that first impression on the paper selectors. So there are a lot of doubts among the students regarding the dress code, duration, content, etc. So I've tried to sum it up here. There are certain pointers that we need to focus on. Firstly, it's recommended to follow the formal dress code, as this shows that you're committed to your work and you take your presentation very seriously. Secondly, the length of the video should range from about 1 to 2 minutes unless otherwise mentioned. Because if you try to increase that length, it will be a difficulty for you to upload the video as well. And it will become a lot of stretch, and the presenter looking at it, they can judge you on the basis of that 1 minute only. You don't need extra minutes to prove your point. This is because think of this like an audition where you need to give your best, you need to stay calm, you need to collect your thoughts and be relaxed, and you need to just communicate your thoughts on the topic well. If you want, you can practice in front of your family and friends and take help of your friends if you want, and then create a final sample video and send it to them. Now, the content on which you are presenting should be brief. And what the selectors notice is that they notice the way you are speaking, your fluency, whether you are putting in expressions or your confidence, and whether you're just speaking out the mucked up things, or whether you are trying to explain the audience what you're
what you are speaking about. So these are the pointers that mainly matter for the video presentation. So to conclude, the art of making the PPT and presenting it in the sample video are just the basic parameters on which we get selected as a paper presenter. No particular skills as such is needed. It's very simple to do. And if you want to do something different, you can check out YouTube and Google for some tips and tricks. You can also download backgrounds or slides which are already customized for your content. I have used PowerPoint School earlier for downloading presentation slides, but now I like to customize my own slides for my PPTs. To become a paper presenter, you need to tick all the boxes from your side and you need to capitalize on all the opportunities coming your way. I personally feel sometimes that when you do all the things right also, there might come a point where you're not selected, just like Akshat mentioned. And these things happen. So don't lose hope, because there are a lot of conferences happening all around India during those times. To conclude, I would just like to say this quote. A wise man once said, life is full of opportunities, you ought to seek them. So these conferences are just a basic opportunities for you to become a better speaker, for you to become a better presenter. So capitalize on those. Now, I would just like to screen share and show you all some of the PPTs that I was talking about, like how from a basic PPT, you can make a very good PPT. So here it is. This is the basic PPT that you can see, the perception of income earners towards the life insurance. Now, yeah, so moving on, I will show you a better example of the PPT if you insert a theme in it. When you insert a theme, the PPT can look something like this. This is the customized theme from the Microsoft Office itself. Now, if I will add another PPT, by this PPT, you can see how much the look has just changed by adding images. And instead of using the theme of Microsoft Office, here we have formatted the background and we have used an image to convey our message. The next one is a simple one. This is this one. Over here, it's just a basic simple PPT where the Microsoft theme has been used. I think you can see the difference between all the PPTs that I have shown. This is the PPT which I used through the PowerPoint school that I mentioned. I downloaded these slides and this is how the information is conveyed. Like, just see, as I'm scrolling, the information is popping up. So it depends upon the presentation that you're doing. This was for my term paper in my college. So for that, I needed such information. So it seemed a bit catchy over there and it looked quite attractive. Moving on, this is the PPT that got me selected for the Chandigarh conference. I have just used plain simple images that are shaped like this, that covers the whole PPT structure. It's pretty simple, but I think you can see the difference. See, I have used a GIF here, but it's not offensive and it's pretty plain simple. I think you all can get the point now, how different, just by editing the background and by adding images, you can see the difference over here. So that's it from my side. Thank you so much for inviting me. I hope you people got to know some of the things that you were looking for and this might have helped you. And honestly, everyone makes PPT in their own way. It's not that if you make a PPT like this only, then only you will get selected. People get selected with simple PPTs also, but I was just talking about the difference that a good PPT can make, and you are the judge of it. So thank you.
Coming up next, we have with us a budding professional who is enthusiastic, has strong willpower, and a positive approach. Mr. Gaurav Thakur will be putting light on the topic, the essence of drafting brief profile and stage presentation. He has been selected as a paper presenter multiple times at Chandigarh and in Ahmedabad National Fund. A man with many talents, he has been awarded with the best council president and all-rounder title at academics level in 2014 and has been recognized as national level dramatic artist at Indian Radio Jockey Congress in 2012. So, ladies and gentlemen, please welcome Mr. Gaurav Thakur. Very good evening, all. Trust me, I'm getting very nervous. मतलब इतना अच्छा introduction thank you Shravan, and I personally believe that बहुत ज़्यादा हो गया था, but thank you for everything. So I request you sir to mitigate. अच्छा guys, are we all of finals? Like we have virtual crowd over here, and they are not going to say anything to me, but I hope these people who are sitting Amitos and Karthik and Aman. So I hope you guys are from final or IPCC, right? So what brings you here? Because guys, it is a workshop. Trust me on this part. It is a workshop. It is not a conference. So let's make this discussion a little bit interactive, right? So what brings you here? Karthik bhai, what brings you here? You can reply by sitting. Yeah, you can. Yeah. So what brings you here? We have seen this event, presentation, we like it, but we know that that is confidence, we don't know how to do it ourselves. Perfect, perfect. So the zeal to present, to become a paper present has brought you here on this platform so that you can imbibe certain things, right? We are always compared with MBAs. We are always compared with management skill person. And we are expected that we should be the professional flag bearer of our community, right? So in order to inculcate those things, I'm standing here in front of you. And I'm just going to talk about that brief thing, that most important thing, that is your brief profile. And I'll tell you why it is important. But first, let me tell you one thing. So it is not very much clear, but let me read it to you. Life is the most difficult exam. Many people fail because they try to copy others, not realizing that everyone has their own set of question paper. Now we all are CS and we all are very much familiar with examination process. And yesterday only we got our results, so let's not go into that. But this is true. And why it is significant? Because I am going to show you something. Back in 2018, when I started presenting paper, I met a person, a very enthusiastic person who was very charming with words, and he was having all the skills to present his things over the stage. But he showed me his brief profile. And trust you me on this, I can guarantee you will not consider that as a brief profile. It's not working. So can you change the slide? वैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि टेक्नोलॉजी में पास तो लाती है मगर उतना ही दूर करते हैं पास भी और दूर भी है so that's what I wanted to. So this is the brief profile of a person. Is it visible? Like थोड़ा बहुत framework if you are not able to read it but फिर भी थोड़ा सा ठीक है. So you can see it is a brief profile of 2 pages. So next slide please. Again 2019 I met this person and this brilliant person was selected as a paper presenter at Ahmedabad National Conference. He presented his paper and he was very much good in that. But this was his brief profile. Can you see it is increasing? So my question to you all is it a brief profile or a detailed profile? Can anyone answer? What do you think? It is detailed, right? So what do you observe from this brief profile? Anything, please. Let's make it more interactive because until and unless you are going to participate, you are not going to learn anything from this. So just tell me, क्या observe कर रहे हैं आप? Too much information. Too much information. That's right. So are you interested in knowing whose profile is this? You are really not interested? Pakka? Yes. Trust me? Yes. फिर भी मैं बताऊंगा because I am happy to know that. So let's go to this. This profile is mine.
Yes, this profile is mine. And can you just see that? I have, consolidated all of information in one sheet of paper, and that is my brief profile. Now, give me your observation. 2 observations I want from this audience. Can you? This is on the main part, like the main things. Yes, the main things. Anything else? Eye-catching, right? Wow, wonderful. Nice observation, everyone. Anyone else? It's very short and simple. Now, let me ask you, have you ever seen a resume of MBA person? No? Google it. Trust me, you will find this thing. This is what I wanted to tell you because it is your brief profile, that is your identity that can make you look like an entity. And while you are sitting in front of an interview board, you have to be an entity. You have to give your identity. And trust me, nobody is interested in reading 3 to 4 pages of brief profile or a resume. And that's why I made it in one single sheet of paper. So coming to this thing. Now the question arises, are we going to make this brief profile in a resume style? That is up to you guys. I have been in organizing for sometimes and I have organized certain things and I realized one thing that people in our fraternity, they do share brief profile with us, but that is not very much brief. It is quite detailed or it is quite very short, like 2-3 lines and that. It is not going to give us a view whether we have to consider you for this presentation or we should not. That's very much difficult for us. We don't want your specific things, but we want certain things that give a clear identification of us. And believe you me, guys, this brief profile, this single sheet of paper is your reputation. Whenever a person is going to read anything from this, it will give him or her an impact that this person is capable or not. So, going to next slide, what brief profile is? How many of you have attended conference? Like some of us, right? How many of us have gone through that schedule, that program structure? I guess some of us. There is clearly written that we, the organizers, we, the branch, require brief profile, but we never define what brief profile is. And believe me, friends, nobody has ever defined this brief profile because it is just a document. It is a typical document which can be termed as a medium to understand your summary, your professional and personal goals, your accomplishment, your target, your achievement. So more or less, it is how you respect your personality and how you want others to perceive it. एक जापानीज कल्चर में विजिटिंग कार्ड देने का एक अटायर है, एक कस्टम है. विजिटिंग कार्ड को कभी भी आप दोनों हाथों से देंगे और रिसीव करने वाला भी दोनों हाथों से लेगा, थोड़ा सा झुक के. That's a dagger. Do we practice this? We are professionals. Next time, do practice it. It will help. Now, coming back, while the approach of resume, I always say this. Several people ask me whether we should go presenting this brief profile as a resume. So I always say that presenting resume, giving resume is more approachable in a job orientation. But here, brief profile is not related to your job. It is related to your identification, your approach. So I have classified key points. What you have to consider while practicing, preparing this brief profile, and it is name and contact details. Secondly, education qualification, professional, academic, and additional. This is the most important segment I always say. Your work exposure or articleship, projects undertaken, internship, industrial training, achievement, and accomplishment. Do you remember this? These are the headings which I'm giving. You have to diversify your personality, and you have to compose them under a heading. And that will give you a clear picture what kind of personality the person who is sending you the resume or a brief profile, or what kind of personality you are presenting now. Now coming to rules, this is the most important part. We are never very familiar with the rules of preparing brief profile. And why? Because we have never given it a thought. Our curriculum is designed in such a way that we are hardworking, but we have never given a minute to introspection. So here, a moment for that. Choose the format.
It is not always like you have to present it in a resume style. It can be anything. Some people would like to have a PPT of their brief profile. Some people might have a videos. So it is completely up to you. But I request you, the golden rule is be concise. Be concise. Don't, just don't flow the things. We are never interested in reading what relation you are having with that person, that so and so person. Neither we are interested in knowing that in that particular 2005 when you were in academics were given with the award of having a great dynamic personality. We are not interested in that. We are just interested in what you have achieved in life that you can call as a possessed possession. Okay. Now that there is make things easily accessible. If I want to see you as a brief profile holder, or if I want to have a clear picture of your presentation, then I'll go with a presentation set. So these are the golden rules. Triple check what you have written so that there should not be any mistake, typing mistake. Headline should be there, make it readable. And the most important, be truthful, be authentic. Don't put certain things, don't put certain stories, brief stories in it. If you are not that kind of a person, do not make it. Because one day or another, one way or another, someone is going to find out the truth and that will not be in your favor. So keep it crisp. Now, brief profile. Like last conference which we had in Chandigarh, people were calling me and asking whether we should give or whether we should send our brief profile. Brief profile is equally important to paper presentation. Trust you me guys, all of you who are trying or who are approaching to be budding paper presenters, they should know this thing that brief profile is an essence. It is equally important as paper presenting itself. It is first step towards professional recognition of yourself. If you are not going to recognize yourself, nobody is going to recognize you, right? So coming to the second part of my presentation, that is stage handling. I'll not take much of your time because stage handling nowadays, because this is COVID era, normal is new normal, right? And this virtual world is the new world for us. So what I think that stage handling is, it has transformed in very folds, and here we are going to discuss some of them. So presentation is nothing but an interaction between a speaker and an audience at large. And here I'm just going to put forward my views that you are listening or you are communicating, trying to be interactive. So let's talk about some soft skills which are necessary. Before that, let me show you this video. And I'm going to ask certain questions. It is 1 minute video, so kindly go through it. So I think there is a technical glitch. We are lacking with the video, but let me give you a brief about this. So the video was about Roman Sally. Do you know who Roman Sally is? Okay. Have you heard about Unacademy? How many of you have heard about Unacademy? अच्छा जी, नाम बता सारे लोग पता, नाम बता किसी को पता है? So Roman Sally, IAS officer, ex-IAS officer who left his services and he went in teaching line, creating Unacademy, having financier of 300 crore rupees by European financiers. इतना काफी उसके introduction. A person is an IAS officer, an inspiration for many. Kindly check out this video on TED Talks. You'll get to know even that person, that esteemed person, is not very much familiar how to handle the stage. While presenting, is constantly moving on the stage from one corner to another, constantly. That's the thing which I want to share. If you are a presenter, you have to be a limited, you have to cover a limited area. Like if you are standing over a dice, I'm presenting my thing over a dice, and I'm controlling my hand. But if I go this way, I might be able to communicate with you, but I'll not be able to communicate with my virtual audience, right? If I'll be moving
from here and there, you'll be constantly focusing on my movement, but you will not be constantly focusing over my this PPT. Right? So this is the thing I want to present you. If you are having a stage phobia, like some people have, you should opt for presenting your views behind this podium. If you are not, then you can cover the stage, but that doesn't mean that you should present like moving across. Believe me, guys, presentation is not about not at all about this dancing thing. It is presenting, take 2 steps forward, take 2 steps backward. It will give a very intellectual sense to the person who is very much mature enough to present the speech. This is the most important. Secondly, whenever you are presenting, try to get interacted with each and every audience. My friend has given a very much a detailed introduction and detailed thing in that Devesh Harpalani's presentation, and he has covered that in a very specific manner. But I personally see that apart from that, you have to look into the eyes of the audience. If you not, then take it till you make it. Look in the middle of your audience, each and everyone, so that they can have a correlation. Third thing regarding paper presentation, particularly, you have been observing that I was turning like this. Avoid this. Yes, I am doing myself here because I have to explain you the things. I have to, imbibe those things. But the thing is, whenever you are presenting, you should never ever look at your presentation, what is running behind you. You should be having a clear insight about that. Plus, your presentation, PPT, as Muskan has said, keep it simple, concise, and crisp. Nobody wants to read the whole content from your PPT. You can read it from whole of this PPT. Why would you need me? So keep this thing. Stage presentation is all about being orator. Sir, can I just change the slide? Stage presentation is all about being an orator. Remember one thing, as my friends have quoted, the former speakers who came before me, they have told you that it is art. Art can be practiced, cannot be taught. Keep this in mind. But everyone has their unique style. Everyone has their unique way of imbibing and inculcating the things. And you all have that. If you are here, that means that you want to be here. Some of you might be standing at this podium and you will be giving the speeches. Believe me, my friends, you are the future. And if you want, if you think, if you believe, and if you have faith that this chartered accountancy profession is going to hold the flag at the utmost top of professionalism, then you are the futures and you have to come here, because gone are the days they are going to compare us with MBA persons. We are excelling them and we have to prove us at every instance. And by standing here, I can say, yes, we are going to prove that. So these are the things, meet and greet. Secondly is adjust to your surroundings. If it is like the whole stage is given to you and you are not comfortable, then take a podium. If you are comfortable, then go for a whole stage. If given a chance, I can present it by staying behind these chairs. So it's up to you, adjust to the surroundings. Then dress to impress. Arijit Singh nahi banna bhai logo, FIFA, IFA इन सब के awards पे चक्रों में नहीं जाना भाई लोगों, अपने को dress to impress रहने का, right? Then positive visualization. Trust me, this is most important. I've seen number of different kind of audience. So this thing, positive approach, smile and work on your punctuations. That's a voice modulation. And be calm and spontaneous. Be calm and spontaneous. Let me narrate an incident. When I was in Ahmedabad, somebody asked me a question which I was not doing. Like, kya 115. It was Indian accounting standard 115, and somebody asked the question and I was not doing the answer. So what I did is, I said, I think. I answered to him. I replied him. I think your question is quite a commendable thing. And I personally believe that my session chairperson is apt person to answer this question because I'm not that person. I tossed my question to him. So that was my spontaneity, which I did. Agar bhai mere se pucha jata to you can imagine the consequences. I don't want to say that. So that's the thing. Can you remember who is? Can you recognize? Yes. Same with respect, my friend. Sir Adolf Hitler, because I consider him sir. The only reason he is the one of the most influential person जिसने पूरा world change करा.
a single spoil turned dictator. And what he says, a unison of theorizer. Pay attention to this, guys. I want you all to be here. A unison of theorizer, organizer, orator. Orator and leader in one person is rare. Greatness lies within. And if we are chartered accountants, because we all are theorizers, हमसे बेहतर कोई नहीं. We are organizers. Believe me, I am a living example of that. Orator, all the person who came here, and leader, which resist in each one of you. Each one of you, we all are capable of everything. Greatness lies within this fraternity, within you, within this course, and then we are going to prove ourselves best professionals. And with that said, I am very much thankful to you guys. Thank you for lending me your ears, and you have been a very wonderful audience. Thank you very much. Thank you, Gaurav, for your insightful knowledge on the topic on the art of presenting paper. Thanks to all the speakers for sharing such gems of wisdom. Now I request CA Neeraj sir to please address the audience with his insightful and abundant knowledge. Sorry, it's CA Neeraj Mittal sir. Sir, are you there? Yes, madam. I'm there. I'm here. Thank you, ma'am. Your good name? Yes, आप अपना नाम बता के जाइए मुझे. Sir, my name is Shagun. Okay, Shagun ji. Thank you so much. Thank you. And one thing, am I audible to everyone? Yes. Okay. But I think I'm not visible. Yes, now I'm visible also. Thank you so much. And अभी गौरव जी के लिए बड़ी अच्छी कमेंट्स में देख रहा हूँ, तो थैंक यू गौरव, आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया. Let me thanks to Chandigarh branch. Actually, I'm not supposed to hire to speak about the presentation skills. Actually, when I talked to Upkar Singh ji, chairman of the Chandigarh branch, so sir said to me, sir, just you have to come and you have to address our audience, to our students for 40 to 50 minutes, just about the presentation, communication, whatever you want to deliver, sir. So my dear friends, as well as I know this today's topic, today's conference is about the paper presentation skills. So दोस्तों, मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ एक presentation के बारे में, there is a very important point to remember, everybody. Actually, I'm not supposed to to talk about the presentation or about the PPT. This is not the cup of my tea. One thing you should remember always, that if whatever you are doing or saying, if it is not working, just do something else. I'm repeating myself. If you are doing anything on the stage or saying something from the stage and it's not working, means you are losing your audience. So in that case, do something else. One of the worst feeling as a presenter is that you have lost your audience. अगर आप अपनी ऑडियंस को खो रहे हैं, आपकी ऑडियंस इंटरेस्टेड नहीं हो रही है, आपकी ऑडियंस अगर काम नहीं कर पा रही है आपके साथ, तो डू समथिंग एल्स. That is the major fundamental of the presentation. One thing I would like to share with all of you. Once upon a time, my younger brother, actually he's working with the Youth Agarwal Sammelan. Yuva Agarwal as by caste, actually I'm a Baniya. तो बनिया कैटेगरी में जो अग्रवाल सम्मेलन हुआ करता है, तो माय यंगर ब्रदर once upon a time he invited me that bhaiya you have to come in Yuva Agarwal Sammelan. So I said okay, I will come. But believe me, I didn't know that time what should I do over there. I thought my brother just invited me just for a normal and formal, just he want to greet me, he want to welcome me, he wanted to welcome me. I wish only that thing. What Mehak, what happened with me that time?
as I reached over there, so my brother was on the stage that time, my younger brother was on the stage that time. As I reached over there, my dear friends, जैसे मैं वहां पहुंचा तो actually on front seat there was some sofa set and my brother's teammates offered me, yes भैया you have to sit here, और मुझे वहां बिठा दिया गया. तो मैं ऐसे ही अपने ब्रदर की स्पीच सुनने लगा, प्रेजेंटेशन सुनने लगा. वो प्रेजेंटेशन कर रहा था. एक्चुअली आई वाज नॉट अवेयर व्हाट इज एग्जैक्टली दैट प्रोग्राम, व्हाट इज द एजेंडा ऑफ दैट प्रोग्राम. एंड मैं वहां जाके बैठा ही था. एंड माय ब्रदर इनवाइटेड मी फ्रॉम द स्टेज दैट वी हैव विद अस माय एल्डर ब्रदर, माय मेंटर सीए नीरज मित्तल, माय ब्रदर. So I would like to invite my brother, please come on the stage and share some words of wisdom with my audience. Actually invited me on the spot. I didn't know about the what is the audience here. कौन बैठा है यहाँ पर, कौन नहीं है. वहां पर कुछ बूढ़े टाइप के भी लोग थे, कुछ जवान यूथ यंगस्टर भी थे. Actually there was a mixture of audience that time. I was shocked to what should I do. Actually invited me on the spot, and as I come to the stage, so I just convey to my brother in his ear. I said, बैठने तो देता यार 2 मिनट, तूने एकदम बुला लिया, बैठने तो देता, मुझे तो पता भी नहीं है क्या प्रोग्राम क्या है, क्या करना होता है. तो he said yes please. उसने सुना ही नहीं उसका भाई क्या कह रहा है, और उसने बोल दिया सीधे, भैया बोलिए प्लीज. अब दोस्तों मेरे हाथ में माइक आ गया एंड आई वाज नॉट अवेयर कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना. रियली आज भी मेरे को जब उपकार सिंह जी ने सर ने बोला, चंडीगढ़ ब्रांच से चेयरमैन साहब ने बोला, तो मैंने कहा सर कोई इशू नहीं है. उन्होंने कहा पीपीटी नहीं सर, आप जो भी बोलेंगे ऑडियंस को समझ आएगा, आई एम डैम श्योर. मैंने कहा चलिए सर, इट्स अ नाइस कॉम्प्लीमेंट फॉर मी. मैं जैसे ही स्टेज पे पहुंचा दोस्तों, पोडियम के पास में गया एंड आई जस्ट होल्ड अ माइक इन माय हैंड एंड आई स्टार्टेड टू स्पीक ओवर देयर एंड आई वाज ब्लैंक, व्हाट शुड आई डू. बट मेरे भाई ने इतनी तारीफ कर दी थी मेरे स्टेज पे जाने से पहले. माय ब्रदर इज दिस एंड दिस, ही इज अ मोटिवेशनल स्पीकर, वो ये है वो है, ऐसा है वैसा है. एक्चुअली वहां पर जितने भी लोग बैठे हुए थे, दे वर वेरी क्यूरियस टू लिसन मी, दे वर वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट मी, कि जो भी बोलेगा अच्छा बोलेगा, ये बंदा जो भी बोलेगा अच्छा बोलेगा. एक्चुअली जैसे मैंने वो माइक पकड़ा, मैं ब्लैंक हो गया एंड रियली मतलब मेरे माइंड में आइडिया नहीं था मैं क्या बोलूं, कैसे शुरू करूं. एंड सूरज आई वाज ब्लैंक, कंप्लीटली आई वाज ब्लैंक. सो माइक लेकर मैंने एक लंबी सांस ली एंड आई वाज थिंकिंग हाउ शुड आई स्टार्ट. जस्ट मेरी नजर गई एक बैनर पे, सामने एक बैनर था, उस बैनर पे लिखा था कि धन शक्ति है, मन शक्ति है, ये शक्ति है. बहुत सारी शक्तियां लिखी हुई थी उस पे, और लास्ट में एक लिखा हुआ था युवा शक्ति, और उस पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था, यूथ एम्पावरमेंट पे. मुझे समझ आया, ओके दिस कॉन्फ्रेंस इज डिजाइन फॉर दिस वर्क ओनली, जस्ट अबाउट टू मोटिवेट आवर यूथ, जस्ट अबाउट टू एनकरेज आवर यूथ. हमारे यूथ को एनकरेज करने के लिए ये सेशन रखा गया है. एंड आई स्टार्टेड with a shairi. As always, I start my speeches with some shairi, some rhymes. I started कि युवा शक्ति है, धन शक्ति है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ था. Then I started my rhymes, क्योंकि मैं शॉक्ड हो रहा था मैं क्या बोलूं. मैंने बोला, वारे वाह जिंदगी तेरे भी अजीब फसाने हैं, वारे वाह जिंदगी तेरे भी अजीब फसाने हैं, हमें तीर भी चलाने हैं और परिंदे भी बचाने हैं. दैट्स गिव मी कॉन्फिडेंस. अचानक से ऑडियंस ने क्लैप किया मेरी शायरी को होते ही. ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. एक्चुअली दे वर वेरी क्यूरियस टू लिसन मी. जैसे उन्होंने ऐसा किया, आई गॉट अ कॉन्फिडेंस. देन आई स्टार्टेड. मीन्स वट एवर आई एम सेइंग, वट एवर आई एम ट्राइंग टू डिलीवर यू, ट्राइंग टू कैटर यू in your presentation, the first point, remember me, the first point, you should have enough confidence to speak whatever you want to cater your audience. आपके पास इनफ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पॉजिटिव आउटलुक होना चाहिए. और कभी कभी
जैसे आप स्टेज पे चढ़ते हैं, ये नहीं होता आपके पास। इन अ वेरी बिगिनिंग ऑफ द टाइम, बिगिनिंग ऑफ योर स्पीच, ये नहीं होता। बट जैसे 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 आप बहना शुरू कर देते हैं स्टेज पर, कुछ कहना शुरू कर देते हैं, तो ये गेन होना शुरू हो जाता है। यू पीपल नोटिस सो मेनी टाइम्स। जब भी आप बोलना शुरू कर देंगे, एक चीज हमेशा अवॉइड करिए। एक्चुअली आज मैंने पूरी प्रेजेंटेशन आप लोगों की ना सुनी ना देखी। What one thing I always just remember this thing, कि most of the time people do one thing, they just read it off their slides. जो भी उनकी स्लाइड पे आ रहा होता है वो रीड कर रहे होते हैं। ऑलवेज स्पीक फ्रीली, स्लोली, एंड डोंट रीड इट ऑफ। जस्ट फ्रीली एंड स्लोली एंड कॉन्टिन्यूसली एंड फ्लुएंटली जस्ट स्पीक। You should be free. Actually, sometimes whenever you are delivering, whenever you are saying something, if you are if you are bound with the so many content in your mind, तो definitely sometimes आप वो डिलीवर नहीं कर पाते जिसे डिलीवर करने के लिए आपको भेजा गया था, जिस कंटेंट के लिए आपको भेजा गया था। You should take care one thing at the time of your presentation. Always start your presentation, always start your conversation with a greeting, with a greet. Always start with a good morning, good afternoon, whatever, but always start with a greet. If you are not starting your conversation with greetings, then definitely you will lose your audience. Actually, firstly, you have to connect with your audience. आपकी ऑडियंस क्या चाहती है और आप उसे क्या बताना चाहते हैं, आपके पास क्या कंटेंट है। आपका टाइम क्रॉस नहीं होना चाहिए। आपकी कॉन्वर्सेशन में जितना टाइम आपको अलॉट हुआ है, ऑलवेज ट्राई कि वो टाइम आपका आगे ना जाए। एंड ऑलवेज इन्वॉल्व, इंगेज योर ऑडियंस। जस्ट पुट सम क्वेश्चंस टू इवेंट अटेंडीज in your slides. Just ask you how many you wake up early in the morning. कुछ भी पूछकर आप शुरू करिए, ऑडियंस को कनेक्ट करिए, ऑडियंस को जगा के रखिए, ऑडियंस को कनेक्ट करके रखिए। ऑडियंस कभी कभी वीडियो ऑफ करके, मैं कई बार कुछ सेशंस लेता हूं, पीपल गिव मी दिस फीडबैक, सर बिफोर यू आई वाज ऑन अ टर्न ऑफ माय वीडियो कैमरा एंड व्हेन यू स्टार्टेड स्पीकिंग, सर दैट टाइम आई जस्ट टर्न इट ऑन एंड आई सेड ओके, अब मेरे मतलब की बात आ रही है। कनेक्शन बनाना बहुत जरूरी है ऑडियंस से। अगर आपका आपकी ऑडियंस से कनेक्शन नहीं है, आप कुछ भी बोलते रहिए, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। कुछ भी, ऑडियंस सिर्फ इसलिए बैठी है, उसका कोई ना कोई स्वार्थ है भरना। हो सकता है उसने पैसे दिए, हो सकता है उसे सर्टिफिकेट मिलना हो। ऑडियंस को इसलिए बैठा हो क्योंकि उसे बैठना है, उसे सुनना है, उसे समझना है, उसका इंटरेस्ट जगाइए। इंगेज योर ऑडियंस इन योर स्पीच। अगर आपने उसे किसी लालच से बिठा रखा है, यस आई रिमेंबर वन स्टोरी। एक बार एक बाबा जी होते हैं, गांव में आते हैं कथा सुनाने के लिए। वो कहते हैं यस मैं कथा सुनाना चाहता हूं। तो गांव वाले में एक व्यक्ति आता है, तो उसके पास एक गमछा होता है। गमछा समझते हैं आप लोग, जो सापी वापी होती है, जिसको बांध लेते हैं, कई बार सर पे बांध लेते हैं गर्मियों में। तो बाबा जी से कहता है, बाबा जी महाराज जी आप कथा करने आए हैं, हम सब इस कथा को सुनेंगे। और वो व्यक्ति अपना गमछा दे देता है, बाबा जी गमछे पे बैठ जाते हैं, कथा शुरू हो जाती है। कथा में डिसाइड होता है कि लास्ट में सबको लड्डुओं का प्रसाद मिलेगा, देसी घी के लड्डुओं का। प्लीज अंडरस्टैंड इट अ वेरी 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 इन अ प्रॉपर मैनर। एक्चुअली दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग अबाउट द प्रेजेंटेशन। तो गमछा बिछा दिया जाता है, महाराज जी कथा शुरू कर देते हैं। जिसने अपना गमछा दिया था वो बहुत जोर जोर से आनंदित होकर कथा को सुन रहा होता है। बहुत सारे लोग जुड़ते चले जाते हैं, बहुत सारे लोग कथा में आ जाते हैं, कथा सुनना शुरू कर देते हैं। कथा में महाराज जी एक व्यक्ति की जीवनी सुनाना शुरू कर देते हैं, किसी की कहानी, बायोपिक। तो बाकी सब लोग ना धीरे धीरे करके उठना शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। तो महाराज जी आंखें बंद करके कथा सुना रहे होते हैं। वो देखते हैं एक व्यक्ति की आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। He was just crying.
ही वॉज एंजॉइंग दैट प्रीच, जो उपदेश वो दे रहे होते हैं उसको वो एंजॉय कर रहा होता है। महाराज जी अपनी कथा और लंबी कर देते 15 मिनट। सारे नालायक गए, एक व्यक्ति सुन रहा है, आंसू भी आ रहे हैं उसके, इस कथा में आनंदित है वो और थोड़ी लंबी कर देते हैं कि और ध्यान से सुनो। देखते हैं तो वो व्यक्ति और तेज रो रहा होता है जब कथा चल रही होती है, समझ रहे हैं, और तेज रो रहा होता है, आनंदित हो रहा होता है, बहुत आनंदित। महाराज जी और 15 मिनट की बढ़ा देते हैं, और भी 15 मिनट और ले। जब कथा का खत्म होने का टाइम आ रहा होता है, लड्डुओं के प्रसाद का टाइम आ रहा होता है, तो सभी भक्तजन धीरे धीरे आके बैठ जाते हैं। एंड में महाराज जी सबको प्रसाद देते हुए उस व्यक्ति से बोलते हैं, बेटा सब लोग नरक जाएंगे लेकिन तुम स्वर्ग जाओगे। कहते हैं महाराज जी क्यों? कहते तुम बैठे थे और तुम्हारा दोस्त बैठा था, दो लोग कथा में बैठे रहे, बस दो लोग बैठे थे, तुम्हारा दोस्त बैठा था और तुम बैठे थे, दोनों रो रो कर आनंदित होकर कथा सुन रहे थे। दैट वॉज द गुड अबाउट यू। तो बेटा तुम स्वर्ग जाओगे और बाकी सब पूरी दुनिया नरक जाएगी। तुम कथा में बड़ा एंजॉय कर रहे थे। जैसे ऐसा बोलते हैं तो जो दोस्त होता है वो बोलता है, महाराज जी मैं इसके चक्कर में बैठा हुआ था, कथा में तो मेरे को भी मजा नहीं आ रहा था और मुझे बैठना पड़ा, मजबूरी था इसके चक्कर में। महाराज जी ने कहा ऐसा क्यों, ये क्यों बैठा था फिर, इसको तो मजा आ रहा था ना। कह रहे महाराज जी आपके नीचे इसकी स्वापी थी, गमछा था इसका, ये सोच रहा था कथा टाइम से पहले खत्म हो गई तो ये लेके निकल जाएंगे, ये इसलिए रो रहा था कि गमछा कब मिले मुझे, ये निकल जाए तो मैं भी निकलूं। मेरी बात समझिए, अगर आपकी ऑडियंस इंटरेस्टेड नहीं है आपके अंदर, समझ रहे हैं, आपने सिर्फ और सिर्फ किसी लालच से उसे बिठाया है, तो वो स्पीच, वो प्रेजेंटेशन, समझ रहे हैं, जस्ट कुछ वक्त के लिए होती है। लेकिन आपकी ऑडियंस आपकी प्रेजेंटेशन में घुस जाए, उस कैरेक्टर में जीना शुरू कर दे, तो आपकी प्रेजेंटेशन बहुत लंबा चलती है। मैं अभी भी जो प्रेजेंटेशन आपको दे रहा हूं ना, बहुत खास नहीं है बट बहुत यादगार होगी, देख लेना। एक व्यक्ति ने मेरे एक सेशन के बाद कहा, लास्ट टाइम व्हेन आई केम टू चंडीगढ़ ब्रांच, आप में से किसी ने अटेंड किया था मेरा सेशन लास्ट टाइम चंडीगढ़ ब्रांच में जब मैं आया था स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस में? ओके, सो आई गॉट सो मेनी मैसेजेस फ्रॉम द चंडीगढ़ ब्रांच, सर आप बातें बड़ी खास करते हैं। मैंने बोला भाई साहब स्टाइल अच्छा है, बातें तो आम करता हूं, खास बन जाती हैं। बातें आम हो, जितनी सिंपल होगी आपकी स्पीच, जितनी सिंपल सोवर होगी आपकी स्पीच, बिलीव मी उतनी ज्यादा मोहब्बत करना शुरू कर देंगे लोग आपसे। जितना सिंपल बोलेंगे आप, जितना सिंपलिसिटी के साथ आप अपनी बात को प्रेजेंट करेंगे ना सामने वाले को, यकीन मानिए उतना ज्यादा आपसे मोहब्बत करना शुरू कर देगा वो व्यक्ति। कहेगा यार स्पीच में दम था। बातें आम करें, बातें नॉर्मल करें, बट इस स्टाइल से करें कि सामने वाले को खास लगने लगे। दैट्स कॉल्ड प्रेजेंटेशन। वरना हम शादियों में जाते हैं, मैरिजेस में जाते हैं, आप लोग गोलगप्पे कहां लगने हैं, चाट पकौड़ी कहां लगनी है, पानी कहां लगना है, सारा खाना ही तो है, सब गेट पे भी रख दोगे तो भी खा लेंगे। बट फिर भी डिसाइड होता है, नहीं 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 साहब, गेट से थोड़ा सा दूर गोलगप्पे होने चाहिए, इधर फ्रूट होना चाहिए, उधर कॉफी कैफे होना चाहिए, इधर ये होना चाहिए। दैट्स कॉल्ड, बातें, चीजें सारी आम थी, चीजें सारी सिंपल थी, कोई आसमान से अलग से उतर के नहीं आई थी कॉफी कैफे की भी कॉफी, बट सजा इतना दिया था, कुछ खास लगने लगी वो कॉफी। एक समोसा कभी आप रेहड़ी पे खाइए या कभी नॉर्मल शॉप पे खाइए, 10 रुपए 15 रुपए वाला समोसा, 15 रुपए का समोसा मजा नहीं देगा आपको। वही समोसा पीवीआर में बैठ के खाइए, जब 90 रुपए का खरीदते हैं आप और पीवीआर के अंदर नाचोस खा रहे होते हैं आप, तो आपको अलग ही मजा आता है, खास बन जाता है वो, बिकॉज मूवी टाइम में आप उसे खा रहे थे। इज इट और नॉट? चैट बॉक्स में प्लीज रिप्लाई मी। एक्चुअली यू नो माय स्पीचेस इज ऑलवेज टू वे कम्युनिकेशन, नॉट वन वे। आई डू ओनली टू वे। मेरी ऑडियंस मेरे साथ जुड़ी रहेगी तो ही मैं बोल पाता हूं। मेरी बैटरी है, ये चार्ज अप है, मैं वहीं रुक जाऊंगा जहां मेरी ऑडियंस रुक जाती है, मैं बोल ही नहीं पाता आगे। जहां मेरी ऑडियंस स्टॉप वहां मैं स्टॉप।
हमेशा आपकी ऑडियंस आपकी कार के टायर है, आपकी कार का एक भी टायर पंचर आप सोच लीजिए, आपकी कार रुक जानी चाहिए वहीं पर। आपकी ऑडियंस में हर एक व्यक्ति को, आई एम नॉट सेइंग सेटिस्फाई करो, बिकॉज वी कैन नॉट सेटिस्फाई एवरीवन, वी कैन नॉट मेक हैप्पी एवरीवन, जस्ट डू योर बेस्ट, but engage 100% people in your speech, engage everybody in your speech, समझ रहे हैं? तो definitely I'm not saying just satisfy everyone, we cannot make happy everyone, we cannot please everyone, so never ever expect 100% positivity from the audience. I'm not saying just to satisfy your audience, because you cannot satisfy, just give your 100% in your presentation. Just engage 100% audience in your speech. Whenever I speak anything, sometimes my mother says to me, अभी भी कहती है मेरी माँ कभी कभी मुझसे, कहती है बातें तो अच्छी बना लेता है। बचपन में जब मैं बोलता था मेरी माँ ऐसे बोलती थी, बहुत बोलता है तू, बहुत बीच में बोलता है। धीरे धीरे मेरी माँ बोलने लगी बहुत अच्छा बोलता है, मुझे समझ आने लगा, okay, this is my talent, my bakwas is my talent. Yeah, last time I think told you in student conference this thing to you कि your बकवास हमेशा आपका टैलेंट बनती है, अगर आप उस बकवास पे पॉलिशिंग कर ले। आपका स्टाइल जितना अच्छा आपकी प्रेजेंटेशन को कर सकता है ना, बिलीव मी, किसी और का स्टाइल आपकी प्रेजेंटेशन को अच्छा नहीं कर सकता। your own created style always make your presentation unique. Getting my point? Whatever I'm saying, your own created style always make your presentation very unique. Sometime मैं देखता हूँ कुछ presentations में हम कहते हैं कि भाई हम यहाँ पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, आपने 3 Idiots मूवी देखी होगी सबने, प्रेजेंटेशन तो चतुर भी देते थे वहां पे, आमिर खान भी देते थे, समझ रहे हैं, उनका दोस्त भी देता था। आपकी प्रेजेंटेशन में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप कभी खाना खाते हैं, देखिए अब अगर मैं खाने पर बात करूं, isn't it true that all of us who want to stay fit and healthy are very cautious and conscientious about the quality and quantity of the food whatever we eat? जो भी हम फूड खाते हैं हम बड़े कॉन्शियस होके खाते हैं, उसकी क्वालिटी को लेकर भी और उसकी क्वांटिटी को लेकर भी। But some of us may eat right quality of the food, but in the wrong quantity. And some of us, we eat the wrong quantity, wrong quality, but right quantity. Eat too less, you may end up becoming weak. And eat too much, you may end up becoming obese. ज्यादा खा लेंगे obese फील होगा, कम खाएंगे वीक फील होगा। बैलेंस करना होता है अपनी डाइट को। ऐसे ही अपने कम्युनिकेशन में, अपनी स्पीच में आपको हमेशा बैलेंस करके रखना है अपने कंटेंट को। आपका कंटेंट बहुत कम है तो आपकी ऑडियंस को आप बहुत वीक नजर आएंगे। आपका ऑडियंस, आपका कंटेंट बहुत ज्यादा है तो वो ऐसे फील करेंगे यार बहुत ज्यादा हो गया। इसको बैलेंस करिए, अपने कंटेंट को बैलेंस करिए, जितना शॉर्ट हो सके, जितना ब्रीफ हो सके, लेकिन इतना ब्रीफ भी नहीं होना चाहिए, टू मच ब्रीफ नहीं और टू मच एक्सेस भी नहीं। इसको ज्यादा खाना भी खराब है और कम खाना भी। मींस आपकी स्पीच में जो भी आप कवर कर रहे हैं, वट एवर यू आर कवरिंग इन योर कंटेंट, वन थिंग कि जितने ज्यादा सर ये कंटेंट बेस्ट कब होता है? एक कंटेंट होता है आर्टिफिशियल और एक कंटेंट होता है योर ऑन कंटेंट। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आर्टिफिशियल चीजों की लाइफ ज्यादा लंबी होती है या ऑर्गेनिक लंबी, जो आयुर्वेदिक आप देखते हैं चीजें, नेचुरल ओरिजिनल चीजें होती हैं? लाइफ लंबी का पूछ रहा हूं, हो सकता है लंबी लाइफ आर्टिफिशियल की हो, लेकिन ज्यादा अच्छा फील कौन कराएगी? ऑर्गेनिक चीज, नेचुरल चीज या आर्टिफिशियल चीज? प्लीज रिवर्ट मी इन द चैट बॉक्स। आई एम वेटिंग, प्लीज रिवर्ट। नेचुरल, नेहा ने आंसर किया नेचुरल, नंदिता ने भी आंसर किया नेचुरल, करण, राहुल,
ऑर्गेनिक, नेचुरल, प्रतीक, एवरीबडी नो। ओके, बट सब हम ठीक होना चाहते हैं एलोपैथिक से बड़ी जल्दी। एक बार मेरी वाइफ बीमार हो गई थी अभी, और उसका कफ बंद नहीं हो रहा था, खांसी बंद नहीं हो रही थी। मैंने एक बहुत बड़े डॉक्टर को उसको दिखाया, 4th डे था उसकी खांसी का। तो पता है मेरी वाइफ डॉक्टर से क्या कहती है? उस डॉक्टर ने एक छोटा सा ऑर्गेनिक, नेचुरल, आयुर्वेदिक भी दवाई दी, बड़े डॉक्टर ने भी। उसने कहा अपना ये वाला सिरप लो, मेरे हिसाब से ये खांसी जल्दी जाए और जड़ से चली जाएगी। मेरी वाइफ कहती है डॉक्टर साहब अपना चाहे 4 इंजेक्शन लगा लो, मेरी खांसी आज ही ठीक हो जाए। मेरी बात समझ पा रहे होंगे आप मैं क्या कह रहा हूं? आर्टिफिशियल कंटेंट वर्क करेगा बट लॉन्ग रन में नहीं करेगा, बट ये लॉन्ग रन में वर्क करेगा। आपका कंटेंट क्रिएटेड कंटेंट होना चाहिए। आर्टिफिशियल कंटेंट आपको कुछ वक्त के लिए वर्क करेगा। अब आप कोई ऐसा कंटेंट बोलने लगे, बड़ा ध्यान से सुनिए, अगर कोई आप ऐसा कंटेंट बोलने लगे जो आपने सारा का सारा यूट्यूब, गूगल से उठाया है, गूगल पे कोई भी करके देख सकता है, उसे मिल जाएगा सारा कंटेंट, वो आप में इंटरेस्टेड ही नहीं होगा। वो कहेगा यार ये सब तो गूगल पे भी था। लेकिन आपका ओरिजिनल कंटेंट होगा जो गूगल से आपने लर्न तो किया है, और आपने उसे क्रिएट कर दिया अपने ओन स्टाइल में। डेफिनेटली पीपल विल लव यू, विल सपोर्ट यू, विल फॉलो यू। यार कंटेंट में दम था, मैंने पहली बार सुना ये कंटेंट। आई एम नॉट टॉकिंग द न्यू थिंग्स टुडे, आई एम टॉकिंग द ओल्ड थिंग्स इन अ न्यू वे टुडे, actually because this is my way. Earlier I told you in student conference also, this is my own way. The things are same, but my way is very new to you. So that's why you are thinking that that is the good content. Are you getting my point? जो पूरा पैकेट है ना, वो मैंने नए पैकेट में बेचनी शुरू कर दी है। चाय की पत्ती, चाय की पत्ती तो इस पूरी कायनात में कोई बदल ही नहीं सकता। चाय की पत्ती का जैसा कलर होता है, जैसी होती है, चाहे वो महक बेचेगी, चाहे ओकेश बेचेगा, चाहे गौरव बेचेगा, चाहे नीरज मित्तल बेचेगा, चाहे तुषार बेचेगा, इस पूरी कायनात में nobody can change the identity of the चाय की पत्ती, the leaves of the tea, but we can change the process, we can change the packet, we can change the way to sell these things. Agreed or not agreed? हम कंटेंट को थोड़ी ना बदल सकते हैं। बहुत से लोग, आपने सुना भी होगा, आप घर में भी होता होगा पक्का ऐसा, कभी कभी घर में पापा आपसे चाय बनवाते होंगे नंदिता से, समझ रहे? नंदिता भी वही चाय की पत्ती डालती है, वही दूध डालती है, वही चीनी डालती है। कभी कभी नंदिता की मम्मी कहती है मैं भी वही डालती हूँ, बट पापा फिर भी कहते हैं नहीं नहीं नंदिता अच्छी चाय बनाती है। कभी कभी आपके गली मोहल्ले में आसपास कोई टिक्की वाला होगा, कोई समोसे वाला होगा, कोई डोसे वाला होगा। आपको हल्दीराम का डोसा समझ नहीं आता कई बार, यस और नो, बट उस रेडी वाले का डोसा ज्यादा समझ आता है। डोसे में वही आलू है, वही मसाला है, वही टिक्की में मटेरियल है सारा, कोई आलू आसमान से नहीं उतरा है, नया वाला पोटैटो नहीं है, फिर भी यू लव दैट समोसा वाला। आई थिंक माई पॉइंट ऑफ व्यू, आर यू गेटिंग इट इन अ वेल मैनर? आपने चेंज करना है अपना प्रोसेस में। कंटेंट कितना भी क्रैम कर लीजिए, बट जब तक आपको कंटेंट का स्टाइल नहीं आएगा प्रेजेंट करने का, बिलीव मी, समझ रहे हैं? बिलीव मी, आपकी प्रेजेंटेशन से रियलिटी लोगों के दिल में नहीं पहुंचेगी, उनके दिल में रियलिटी पहुंचनी चाहिए, आर्टिफिशियलनेस नहीं, ओरिजिनलिटी पहुंचनी चाहिए। खुदा कबूल करता है दुआ जब दिल से होती है, पर मुश्किल तो यही है, ये बड़ी मुश्किल से होती है। ये जो अपना स्टाइल है ना, पूरी दुनिया को ढूंढ लेंगे आप लोग, बट अपना वाला स्टाइल ढूंढने में यू विल गेट द सो मच टाइम एंड यू हैव टू वर्क ऑन इट। डेली डू वन प्रेजेंटेशन विद योर स्टाइल, daily do one thing in a unique style. Somebody ask me, सर ये कंटेंट डेवलप कैसे होता है? सर ये कंटेंट कैसे डेवलप होता है? ये कंटेंट कैसे मिलता है? ज्यादा से ज्यादा कंटेंट कैसे आएगा? फिर हम उसको चेंज कर देखिए सर ये ज्यादा से ज्यादा कंटेंट कैसे मिलेगा हमें? कोई बता सकता है, रिप्लाई कर सकता है मुझे?
कंटेंट एक व्यक्ति का कैसे अच्छा होता है? गूगल से, यूट्यूब से, किताबों से, किस चीज से अच्छा होता है? एक व्यक्ति को कंटेंट ज्यादा अच्छा किससे मिलेगा? कैन एनीबडी टेल मी? एनीबडी? अनम्यूट करके भी कर सकते हैं आप, या चैट बॉक्स में लिख दीजिए। एक इंसान का कंटेंट बेस्ट कैसे होता है? नॉलेज, एक्सपीरियंस से, रिसर्च से। ओके, एनीबडी? जितनी ज्यादा रीडिंग होगी, ओके, इन सब का एक ही आंसर है, ऑब्जर्वेशन से। जितना ज्यादा आप ऑब्जर्व करेंगे चीजों को, बिलीव मी, मेरे ऑफिस में एक वोल्टेज थी एसी की। एसी का स्टेबलाइजर होता है, वोल्टेज होती है। तो लिव गार्ड की वोल्टेज थी, LIVGUARD, लिव गार्ड, LIV, लिव गार्ड। तो मैंने अपने ऑफिस की वोल्टेज वो देखी और मुझे कहीं बात करनी थी। एक दिन मेरी ऑब्जर्वेशन ऐसी आ गई, मैंने वो देखा। somebody asked me after 3 to 4 days, अच्छा एक चीज, one thing before this, if you noticed it, जब भी हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं, जैसे आज तक आपको पता नहीं था किया की कोई सेल्टोस गाड़ी है, लेकिन आज अगर पता चल गया किया की सेल्टोस कोई कार है, तो यकीन मानिए रोड पे आपको ज्यादा दिखनी शुरू नहीं हो जाती। सच सच बताना, सच सच। जिस दिन आपको पता चला कि किया की सेल्टोस की भी कोई कार होती है, तो रोड पे ज्यादा दिखनी शुरू नहीं हो जाती। यस, क्योंकि आपके माइंड ने वही टाइप का केमिकल रिलीज करना शुरू कर दिया और उसने देखना शुरू कर दिया। अब कभी नोटिस करना, अभी जैसे मैंने लिव गार्ड नाम की वोल्टेज बोली है, स्टेबलाइजर बोली है एसी की, बिलीव मी, आप मोस्ट ऑफ द टाइम अब आपकी नजरें स्टेबलाइजर पे जरूर जाया करें। समझ रहे? आप कोशिश देखना, घर में जो भी एसी लगा होगा, आप स्टेबलाइजर पे जरूर नजर मारेंगे, आज ही पक्का। दैट्स क्रिएट योर ऑन कंटेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऑब्जर्वेशन, नए नए कंटेंट, बस चीजों को देखो ऐसे किसी को बता सके, सुनो ऐसे सुना सके, पढ़ो ऐसे पढ़ा सके, और जियो ऐसे दूसरों को जीना सिखा सके। गेटिंग माय पॉइंट? चीजों को पढ़ो ऐसे पढ़ा सके। मुझे आई रिमेंबर वंस डे इन माय लाइफ, मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में था, मेरा एक पड़ोसी आया, भैया कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा देंगे? राइट नाउ चार्टर्ड अकाउंटेंट, दैट डे ही केम टू माय हाउस एंड आस्क्ड टू मी, भैया आप मुझे कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा देंगे? मैं थोड़ा नालायक वाला टाइप का आदमी था, बट सीए कर रहा था तो थोड़ा सा पर्सनालिटी भाई की अच्छी थी। सीए में अपने आप पर्सनालिटी अच्छी हो जाती है कि भाई सीए कर रहा है, सीए तो खराब कर देती है, लेकिन सीए कर रहा है ना, ये बात पर्सनालिटी में 4 चांद लगा देती है। जब लोग पूछना, अच्छा सीए कर रहे हैं आप? सीए तो वैसे ही रिजल्ट बहुत गंदा आता है। गुड यार, सीए कर रहे हो तो ऑब्वियसली इंटेलिजेंट ही होंगे, इज इट और नॉट? 4 चांद लगे। लेकिन सीए का स्ट्रगल हमें पता है हमारी क्या हालत करता है। जो सीए कर रहा है, ये मैसेज जाता है ना जो बाहर मार्केट में, ये बड़ा 4 चांद लगा देता है। तो ही केम टू माय हाउस एंड आस्क्ड मी, अपने पापा के साथ वैसे आया था नालायक, कहने लगा भैया आप मुझे कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा देंगे? मेरे को, मैं सच्ची बताऊं, आता जाता तो नहीं था, 12th इतनी अच्छी नहीं थी मेरी, तो कंपार्टमेंट वैसे थी। आई थिंक अर्लियर आई टोल्ड यू इन माय लास्ट सेशन, I got compartment in the 12th class in accountancy and right now I'm chartered accountant. So मैंने बोला उसको जोश में, मैंने कहा आप पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि अंदर से मेरी लगी हुई थी, अबे तेरे को कैसे पढ़ाऊंगा, मेरे को खुद नहीं आता। 12 नंबर थे मेरे 12th में, बट चल तू आया है तो बेटा कुछ सोच के ही आया है। पापा वैसे साथ थे, उसके पापा साथ थे, तो मैंने उसको बोला ठीक है करा दूंगा, शाम में आ जा तू। शाम में वो आया, भाई साहब अपनी बुक लेके, डीके गोयल की बुक थी उसके पास, जो ऑथर है डीके गोयल, उनकी बुक थी, उस बुक को लेके आया। मैं आपको सच्ची बोल रहा हूँ, मम्मी कसम, मैंने वो बुक ली और मैंने ऐसे करके कैश फ्लो देखना शुरू किया। और उससे पहले 1 घंटे पहले जब वो आने वाला था, 1 घंटे पहले मैंने 10 मिनट 15 मिनट लगाए थे उसे पढ़ाना कैसे है। मेरी बात समझ लेना बहुत ध्यान से। एंड बिलीव मी, मेरा खुद का कैश फ्लो का चैप्टर इस पूरी कायनात में इतना अच्छा हो गया, मैंने कभी बिलीव नहीं किया।
मेरी पूरी 12th में कभी मुझे कैश फ्लो नहीं आया, लेकिन जिस दिन मैंने कैश फ्लो पढ़ा ना पढ़ाने के लिए, उस दिन मेरा बेस्ट हो गया कैश फ्लो। मैं आपको स्टडी का भी स्किल दे रहा हूं। जितने भी लोगों का जो भी सब्जेक्ट बेकार है ना, आप उसे पढ़ाना शुरू कर दीजिए। किसी को भी पढ़ो ऐसे पढ़ा सके, देखो ऐसे बता सके, सुनो ऐसे सुना सके, एंड जियो ऐसे दूसरों को जीना सिखा सके। मीन्स सर, इफ यू विल कन्वर्ट इट इन इंग्लिश, then what would we say? Listen to speak the people, active listening. Study to teach the people, active study. See to show the people, active watch. Inspire, aspire, inspire to aspire. इंस्पायर होइए ताकि लोगों को एस्पायर कर सके। एक्टिव लाइफ, दैट्स कॉल्ड ऑब्जर्वेशन, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रेजेंटेशन। Getting my point? Important part to build a content in your mind, to build an idea. Sometimes some people messages me, सर जैसे आपको आइडिया आते हैं ना, अच्छे अच्छे आप बता रहे थे, मुझे ये आइडिया आया। सर ये आइडिया हमें नहीं आते कभी। ये बिजनेस के आइडिया जो आप कह रहे थे आपको आते रहते हैं। कभी कभी नेहा का मैसेज आता है, सर ये आइडिया हमारे माइंड में क्यों नहीं आते। फिर तुषार कहता है, सर ये वाली बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई, जितनी जल्दी मेरे दोस्त के माइंड में आती है। इसका एक ही रीजन है, बस आप ना बहुत ज्यादा किसी चीज से चिपके हुए हैं, आप बहुत ज्यादा ऑब्जर्व नहीं कर रहे। अपनी चीजों को ऑब्जर्व करना है, उनसे चिपकना नहीं है, उस कंटेंट को क्रैम नहीं करना, उस कंटेंट को खाना नहीं है। डेफिनेटली फिर आप देखिए फ्रीली क्या क्या बोल देते हैं। देखिए ना, मेरी प्रेजेंटेशन खत्म होने वाली है, 5 मिनट की रह गई है, कितनी बेहतरीन हो गई। यस और नो, आपसे फीडबैक भी ले रहा हूं मैं साथ। कितनी बेहतरीन हो गई, कितना बेहतरीन तरीके से मैंने आपको अपनी बात को, कंटेंट को डिलीवर कर दिया, पता भी नहीं चलने दिया। जितने लोग थोड़ा सा सो रहे थे वो भी जाग गए, आ जाओ भाई आ जाओ, सर कुछ बोल रहे हैं, सर कुछ कह रहे हैं। मेरी बात समझ आ रही होगी मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। क्लियर? व्हाटएवर। तो 2 मिनट्स होने, 2 मिनट्स में एंड करते हैं। बट एंड करने से पहले कुछ पॉइंट्स मैं आपको अगेन बोल रहा हूं, जो मैंने रिवाइज करा रहा हूं, जो मैंने आपको आज सिखाए हैं। पहली चीज, whatever you are doing or saying is not working, do something else. क्या कह रहा हूं मैं? Whatever you are doing or something, saying something from the stage, do something else. Number 2, one of the worst feeling as a presenter that you have lost your audience. अगर आपकी ऑडियंस आपसे दूर भाग रही है तो ये वर्स्ट फीलिंग है आपकी प्रेजेंटेशन की। एंड तीसरी चीज, ऑलवेज स्टार्ट योर कॉन्वर्सेशन विद ग्रीटिंग्स, with connection building with your audience. Don't try to satisfy 100% people, just grab the attention of the 100% people. Getting my point? Grab kare attention. Fourth point, you need to be clear about your audience and your message. You need to be clear about your audience and about your message also. And fifth point, very important, expand your ideas just by observation. मैं यूथ अग्रवाल सम्मेलन में अगर सामने बैनर पे नहीं देखता क्या लिखा हुआ है तो मैं अपनी स्पीच को अच्छा नहीं कर सकता था। एंड स्पीक फ्रीली, स्लोली, एंड ऑलवेज क्रिएट योर ओन कंटेंट। डोंट कॉपी इट एज इट इज, जस्ट पॉलिश योर कंटेंट एंड आस्क इवेंट अटेंडीज क्वेश्चंस एंड टेक इन देयर रिस्पॉन्सेज। जैसे मैं ले रहा हूं आपको, ask event attendees questions, उनसे क्वेश्चंस पूछिए एंड टेक इन एक्शंस, रिस्पॉन्स आल्सो। उनके रिस्पॉन्स का वेट करिए, वरना वो कहेंगे यार सुनून तो है ही नहीं ना, हमें सिर्फ अपना अपना बोल रहा है, बस हमें तो एंगेज कर रहा है। बहुत से लोग मैंने देखा क्वेश्चन पूछते हैं, यस हाउ मेनी डू यू नो अबाउट इट, ओके मैं बताता हूं, वो सुनता भी नहीं है किसने बोला है कि हाँ मैं जानता हूं इसके बारे में। यू हैव टू वेट फॉर योर ऑडियंस रिस्पॉन्स। गेटिंग माई पॉइंट? एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, don't try to cover too much material and too less material. Thank you so much. Right, thank you. And I hand over the mic to the Shagun, the lady who is anchoring this program, and very beautifully Shagun is anchoring this program. And thank you Shagun, thank you so much Chandigarh branch, thank you to my audience, thank you everyone.
Thank you, Skillset, sir, for your words of wisdom and appreciation for all of us. I would now like to request P.U. Karsing, sir, to please present the mementos as a vote of thanks to Gaurav Thakur, the organizer of the event. Gaurav. I request Rakesh sir and Amita ma'am to please join P.O. Karsing, sir, to present this momentum. शगुन मैम मेरी भी नमस्ते कर दीजिएगा सर से। उपकार सिंह सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार, कैसे सर? थैंक यू सर, थैंक यू सर। And Arjun Nadyar, the actor. Me, ज़्यादा आ गया था। Gaurav Thakur. On behalf of all the students, I extend my hearty vote of thanks to our chairman of Chandigarh branch, C.O. Karsing sir, and C.A. Neeraj Mittal sir, who spare time from their busy schedule to face the occasion. I would also like to thank all our students, Akshay Dineshwari, Priyanshu Jain, Muskan Gupta, C.A. Devesh Kattani, and Gaurav Thakur for being an important and indispensable part of this seminar. A big thank you to our audience for being so patient and supportive. Thank you, one and all. Now I request everyone to please stand in the order of national Thank you, everybody. Thank you to the virtual audience and invisible audience. Here we conclude our seminar for today. Thank you, everyone. Good evening to all. अब आप लोग घर जा सकते हैं। बाय बच्चों वालों। चंडीगढ़ ब्रांच एक प्रोग्राम कर रही है हेरिटेज पे, उस पे ग्लोबल